So hello everyone. So I hope my screen is visible and I'm clearly audible. So can anyone of you just write in the chat so that I will, okay. Thanks, Mohammed. Sure. So let's get started with the third session on this rack course. So, and in the first two sessions, we actually covered introduction to natural language processing and LLMs. In the second session, we basically tried covering idea about RAG, what it is, and basically the basic architecture of RAG. And in this session, screen is not visible. Okay, let me just share this. Yeah, is my screen visible now? Okay, thank you. Sure. Okay, so yeah, I did not share in resource in the last session. So sorry about that. So basically, I told in the last session that I am working on the resource like this PPT, and today once the architecture of modular RAG and advanced RAG gets completed, then perhaps I can just share and upload this particular presentation in the resource section so that you can view it. Yeah, so in the last session, we basically tried looking at the architecture of the RAG and the latest session which we had, which we were supposed to host on the last Sunday, actually वो session हो नहीं पाया था. There were few technical glitches because of which वो session हो नहीं पाया था. तो कोई दिक्कत नहीं है. आज हम लोग उसी को cover करेंगे. Don't worry, जो पिछला session था, we will like try to cover everything from the scratch so that the people who have missed it, they won't be facing any issues. तो हम लोग आज फिर से मतलब थर्ड सेशन को स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. So the agenda for today's session is we want to cover advanced RAG and modular RAG का theory. Also, we want to look at some sort of evaluation metrics for RAGs. कि मतलब रैक को इवेल्युएट कैसे करते हैं आप अगर आपने मॉडल बना लिया तो कौन से मेट्रिक्स रहते हैं जिससे आप उस पर्टिकुलर व्हाट इज एक्सपेरिमेंट को इवेल्युएट कर सकते हो. तो दैट वी विल ट्राई टू लुक फॉर. एंड आफ्टर दैट मैंने एक छोटी सी नोटबुक बनाई है. तो वी विल जस्ट ट्राई टू टेक अ ग्लांस आउट ऑफ इट लाइक मतलब जो डिफरेंट मैंने मेथडोलॉजीज जो मैं बताऊंगा एडवांस रैग या मॉड्यूलर रैग में जो यूज की जाती है तो उसको बेसिकली पाइथन में या फिर मतलब ओपन एआई के थ्रू या फ्री एलएलएम्स के साथ. डोंट वरी, आई विल बी शोइंग बोथ द अप्रोचेस. वन इज पेड अप्रोच, अदर इज फ्री अप्रोच. सो एलएलएम्स के साथ एग्जीक्यूट कैसे करना. इट विल बी जस्ट अ डेमो नोटबुक. एंड इन द नेक्स्ट सेशन इट विल बी एन एंटायर कोडिंग सेशन जहाँ पे हम एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाएंगे ऑन रैक्स. सो आई थिंक दिस कोर्स विल comprehensively cover everything from the scratch. So first lecture में हम लोगों ने LLM और NLP के बारे में पढ़ा. सेकेंड में रैग्स के बारे में पढ़ा. थर्ड में एडवांस रैग हम लोग टच कर रहे हैं. एंड फोर्थ में we will be like working with the practical use case and that's will be okay. So I hope this is fine. So any questions if you have before we get started? Okay, I take it as no. Fine, sure. Thanks, Aditya. So let's get started. Now I won't be opening the chat very often. बाद में मतलब एक बार जब ब्रेक लेंगे तब हम लोग चैट ओपन करके देखेंगे. तो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली रिवाइज कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था. तो लेट मी जस्ट ओपन द presentation mode. Yeah, so in the naive rack we actually looked at like what is architecture of rack. तो basically मोटा मोटा तौर पे रैग ये होता है कि आप किसी भी आपके जो LLM एप्लीकेशन है उसको इंटरनेट एक्सेस या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस नहीं रहता, कोई भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का एक्सेस नॉलेज बेस का. तो उसके लिए आपने मतलब रैग सिस्टम बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज. उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल डेटाबेस फीड करते हैं अपने करंट एग्जिस्टिंग एलएलएम को and we basically incorporate that existing knowledge base in order to like make our LLM say aware about the latest information or say domain specific information or external information which we want
our LLM to learn. सो बेसिकली इसके लिए हम लोग नाइव रैग यूज करते हैं. इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. देन वी टॉक्ड अबाउट द एडवांस रैग. देयर वर फ्यू इश्यूज विद द नाइव रैग. सो इश्यूज क्या आते हैं? नाइव रैग का एक बहुत प्लेन आर्किटेक्चर रहता है जिसमें आप सीधा एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट बेस उठाते हो, उसको वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हो, यू विल स्टोर इट इन सम वेक्टर स्टोर, और फिर आप एक रिट्रीवर यूज करते हो. रिट्रीवर से उसका जो सिमिलर क्वेरी है, टॉप सिमिलर क्वेरीज यू ट्राई टू फैच इट, और जो भी आपके सिमिलर क्वेरीज होंगे उसको आप कॉन्टेक्स्ट बोलते हो. वो कॉन्टेक्स्ट को आप एलएलएम को फीड करते हो, और एलएलएम को बोलते हो कि भाई ये जो कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट किया है उसमें से गिव मी द आंसर. ओके, इसमें इश्यूज ये होते थे नाइव रैग में कि नाइव रैग बेसिकली will be hallucinating a lot. Okay, since it's a very straightforward procedure, there are no extra layers in order to fine tune the algorithm. There are no extra layers in order to work on prompts or queries. There are different ways to engineer prompts. There are different ways to engineer queries as well. Okay, and there are different ways to split the instructions, or say हम लोग algorithm को भी fine tune कर सकते हैं. There are many methods in order to what do you say, टेक आउट लिमिटेशंस ऑफ द नाइव रैक. तो एडवांस रैक पिक्चर में आया. एडवांस रैक में एक्स्ट्रा चीज क्या थी कि जो नाइव रैक के प्रॉब्लम्स थे, जो हेलुसिनेशन का एक प्रॉब्लम था, एंड सेकेंड प्रॉब्लम वाज बेसिकली अगर मैंने डेटा में, आई आई होप यू रिमेम्बर आई टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, कि अगर मैंने डेटा में सिमिलर लुकिंग कंटेक्स्ट देना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल एक पेज में आई एम राइटिंग 5 पैराग्राफ्स, बट सब में मतलब मोर और लेस मैंने सेम ही चीज लिख रहा हूँ. ओके, और फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. तो वो क्या करेगा, अगर वो क्वेश्चन के रिले जो आंसर है उसका it is coming from these 5 paragraphs, it will directly pick those 5 paragraphs as the relevant document set. हम लोग उसको context बोलेंगे. वो context सेव होगा. बट आप एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे बेसिकली वी आर जस्ट गिविंग द रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन, जस्ट रिटन इन डिफरेंट स्टाइल. तो वो पांचों के पांचों पैराग्राफ जो है दे आर गिविंग यू द सेम इंफॉर्मेशन. इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू डिफरेंट इंफॉर्मेशन, राइट? बट बिकॉज आपका जो नाइव रैग है वो एकदम सिंपल मॉडल है, तो उसमें वो पांचों रिपीटेड वाला इंफॉर्मेशन है. इट विल कॉल इट एज अ कॉन्टेक्स्ट, और आपको जो आंसर देगा ना उसमें, आई मीन that answer will not be very much helpful or fruitful since it is coming out of a repetitive content. Okay, so that was another limitation of naive rag. So इसको दूर करने के लिए एडवांस रैग में हम लोगों ने कौन सी चीजों को एड्रेस किया? So we addressed a pre retrieval stage and post retrieval stage. तो प्री रिट्रीवल स्टेज और पोस्ट रिट्रीवल में हम लोग क्या करते थे? इफ आई वांट टू शो यू. सॉरी. सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट एडवांस रैग. एडवांस रैग में हम लोगों ने क्या किया था? प्री रिट्रीवल और पोस्ट रिट्रीवल का यूज किया था. तो प्री रिट्रीवल और पोस्ट रिट्रीवल चीजों को कैसे अलग बनाता है, अगर आप देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है. सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड हो गया और ये वाला पार्ट ऐड हो गया. तो ये दोनों पार्ट्स करते क्या है? तो ये प्री रिट्रीवल जो है दैट बेसिकली वर्क्स ऑन द यूजर क्वेरी. ओके, तो वो कैसे क्वेरी पे काम करता है? समटाइम्स योर यूजर क्वेरी और यूजर इनपुट जो होगा दैट माइट बी पुअरली वर्डेड. ओके, वो जो क्वेरी यूजर लिख रहा है दैट माइट नॉट बी अ वेरी गुड रिटर्न क्वेरी. मतलब कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते थे, आर वेरी एम्बिग्यूअस. अगर हम लोग भी पढ़ते तो वी फील कि अरे नहीं यार, ये तो इतना प्रिसाइज लिखा नहीं है. तो बेसिकली उस केस में अपना जो एलएलएम है या फिर अपना जो इंटरेक्टिव एआई टूल है दैट वोंट बी एबल टू गिव अस अ गुड आंसर इन रिटर्न, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू वर्क ऑन सम सॉर्ट ऑफ प्री रिट्रीवल. वी शुड एड्रेस द प्री रिट्रीवल स्टेप, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? अपना जो प्रॉम्प्ट है या फिर क्वेरी है, नॉट प्रॉम्प्ट, अपना जो क्वेरी है इसको हम लोग डेटा मतलब we will take it through a fine grained data cleaning approaches. Then we will make use of sliding window and small to big. Don't worry, I'll be explaining these things in the next slides. Then हम लोग उसमें, I mean, we can do multiple things like query rewrite कर सकते हैं. Then we can just use a retrieval router. As in हम लोग उस query को different RAG pipelines से व्हाट यू से नेविगेट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, राउट कर सकते हैं. सो बेसिकली इस सब से होगा क्या? आपका जो क्वेरी है ना दैट विल बी, इट विल बी मेक श्योर कि आपका जो क्वेरी है दैट इज बीइंग रिटन इन द मोस्ट क्लियर एंड क्लीनली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. तो बेसिकली अगर वो स्टेप आप उस पर काम करते हो
तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन इट विल बी वेरी मच क्लियर टू दी LLM एंड देन बेसिकली इट विल बी एबल टू फेच द रिलेवेंट आंसर फॉर दैट। अभी प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी है कि जब वो रिलेवेंट आंसर फेच कर रहा है, तो जब हम लोग नाइव रैक की बात कर रहे थे तो वो सीधा मतलब टॉप 5 या टॉप के आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तो बेसिकली इट वाज फेचिंग इट, राइट। तो एडवांस रैक में ऐसा क्या हम लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने एक पोस्ट रिट्रीवल लेयर ऐड कर दिया। तो पोस्ट रिट्रीवल लेयर क्या करता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एक्सट्रैक्ट किए, जो सपोज मैंने बोला कि मैंने क्वेश्चन दिया रैक को और उसने बेसिकली टॉप 25 रिट्रीवर ने जो है टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स मेरे को रिटर्न करके दिए। ओके, अभी आई एम नॉट श्योर कि टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स में कितने डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली सेंसिबल है। ओके, तो उसमें क्या करूंगा, मैं एक और लेयर ऑफ फिल्टर ऐड करूंगा। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फिल्टर, विच इज नथिंग बट अ पोस्ट रिट्रीवल लेयर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, री-रैंक करते हैं। तो आपके जो टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं एक एडवांस्ड व्हाट इज लैंग्वेज मॉडल से री-रैंक करूंगा। उसका जो रैंकिंग है आई विल चेक कि इसमें से सबसे रिलेवेंट कौन सा है, एंड देन आई विल जस्ट ट्राई टू री-रैंक ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स, टॉप डॉक्यूमेंट्स। देन मैं फिल्टर करूंगा। सो मैंने अगर टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है, एंड समटाइम्स इट माइट हैपन कि टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स के 25 के 25 यूजफुल ना हो, तो उस केस में व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी जस्ट री-रैंकिंग दोस एल्गोरिथम्स, those documents with the help of some algorithm, and then I will be making use of some filter. तो फिल्टर से क्या होगा, टॉप 3 या टॉप 4 में उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा आउट ऑफ दिस री-रैंक डॉक्यूमेंट्स, and I will try to compress my prompt. Okay, there is one more thing which is known as prompt compression. So understand there are these two things are different. Query is different, prompt is different. Okay, prompt is generally an instruction. तो आप मतलब अपने LLM टूल को बोलोगे या फिर LLM algo को बोलोगे कि basically you are say question Q&A answering assistant, and your job is to provide answer for any user query with the help of given context. तो फिर आप उसको context feed करोगे और question feed करोगे. That is what it is prompt. Prompt is basically used for instruction. Okay, query is basically directly a question. मतलब user कोई question पूछ रहा है, that is nothing but a user query. तो हम लोग prompt पे भी काम करेंगे कि prompt मतलब if we are producing the correct prompt or not. Then the next flow goes like same, मतलब हम लोग prompt compression करके जो भी अपना prompt है that we will just pass it to LLM, and LLM में now we have the modified instruction, we have like a better query, and we have better like say identified documents with the help of re-ranking and filter method. And फिर हम लोग क्या करेंगे, वो वाला जो सिस्टम है उससे हम लोग आंसर जो है फाइनल वी विल बी एक्सपेक्टिंग LLM टू गिव अस दैट आंसर, एंड विच विल बी लिटिल मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ नाइव रैक. Okay, so that is difference between naive RAG and advanced RAG. So in this session, our basic target is to complete the naive advanced RAG and to like complete the modular RAG. Okay, so I will just go to the re-ranker wala system. So I was telling about this कि मतलब एडवांस रैक जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें आई मीन यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट डीप लर्निंग मॉडल्स और लैंग्वेज मॉडल्स इन ऑर्डर टू रैंक और प्रायोरिटाइज द मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ये जो ऑल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से मैंने टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया। ओके, एंड मेरे को ये जो टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, नॉट ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट। ओके, सो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इस टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ नाइव रैग अगर मैं करना चाहता हूँ, नाइव रैग में टॉप 25 को निकाला और उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, बट नॉट ऑल टॉप 25 व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट इन दिस केस, राइट। सो अगर मैं ऐसा रिजल्ट उसको कॉन्टेक्स्ट करके प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इट विल नॉट बी एबल टू गिव मी एक्यूरेट क्वेरी आउट ऑफ इट, राइट। सो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, out of 25 it is giving me the top 3 documents. So basically ये top 3 या top 5 मैं select कर सकता हूँ with the help of re-ranker. मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी documents थे उसको use करके I have re-ranked them, and basically I just extracted the top 3 top 5 or like less number of observations than 25, and फिर मैं उन्हीं observations को या उन्हीं documents को I'm just feeding that as my context. Okay, so that is nothing but re-ranking system. तो एडवांस रैंक में re-rankers यूज होता है, एंड like how it benefits, it basically enhances the context understanding. Okay, then it is also helpful for noise reduction. Again मैंने बोला 25 के 25 डॉक्यूमेंट्स शायद हेल्पफुल नहीं होंगे, तो अगर वो हेल्पफुल नहीं है इसका मतलब स्टैटिस्टिकल एनालॉजी क्या होगा, दैट मींस दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग सम नॉइस. ओके,
So if you want to reduce that, then basically you can make use of re-rankers in order to like retrieve the top end documents out of the selected or retrieved documents by the say naive rank system. Okay. Then ये जो re-rankers होते हैं, they can handle the complex queries since they have like it's kind of an extra layer of say language model on top of the current system. So basically they are advanced in nature. And then there are multiple re-ranking setups. Like we have two-stage re-rankers or we have multi-pass re-ranking setup, things like that. So basically अगर आपने सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर ये एग्जाम्पल में हम लोग बोल रहे हैं कि BM25 रिट्रीवल का यूज किया, मैंने लास्ट टाइम आपको मतलब बताया था BM25 रिट्रीवल इज अ स्पार्स रिट्रीवल जिसमें हम लोग विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द सिमिलर आई मीन विल ट्राई टू कंप्यूट द सिमिलरिटी स्कोर फॉर व्हाट यू से डॉक्यूमेंट एंड द क्वेरी with the help of this sparse representation जिसमें हम लोग ने BM25 रिट्रीवल का यूज किया था. एंड दैट इज द फर्स्ट सर्च जहाँ पे मेरे को टॉप इन दिस एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे BM25 यूज किया था मेरे को टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स मिल गए. ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम यूजिंग बर्ट. ओके, तो मैं बर्ट अगर यूज करूंगा इस स्टेज में तो ये जो 25 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से मैं बेसिकली टॉप 3 या टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड देन आई विल कॉल दैट टॉप 3 और टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स as my final context. I won't be calling this top 25 as my final context. I'll be calling this top 3 or top 5 as my final context. Okay. So there is one nice re-ranker, which is known as coher re-ranker. So, but might be a very basic, example to re-rank the uh, documents, but that is not used often. So Coher re-ranker is mostly used. So Coher एक ऐसा मतलब they have their own API जैसे आपका OpenAI है उसकी APIs है वैसे ही Coher ने बहुत सारे language models को train किया है. They have their famous Coher re-ranker and that is a very what do you say advanced re-ranker which is used in most of the advanced RAG applications. There are multiple other re-rankers as well, but Coher re-ranker is like little famous just like OpenAI. Uh, and it has different plans. I mean, you can use it for enterprise use. You can just use it for say individual use. So for individual use, I think वो free है for some limit, and you can definitely take help of it. There is a web page and documentation of Coher APIs. So वहाँ पे आपको re-ranker मिल जाएगा, वहाँ पे आपको different embeddings मिल जाएंगे, different things you will be able to find. Okay, so ये re-ranker जो है that we can be used in the second layer of say re-ranking the documents. तो ये काम कैसे करता है? So it basically takes a search query and list of documents as input. तो जैसे मैंने बोला था आपका search query है जो आपका question है and the second is basically आपने जो top 25 documents select किया उसको input करके लेगा and then वो क्या करता है relevance score calculate करता है. So that is again आपको re-rank करना है किसी भी चीज को. आपको री-रैंक करने के लिए यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सिमिलैरिटी स्कोर और सम सॉर्ट ऑफ रिलेवेंस स्कोर और सम सॉर्ट ऑफ अ नंबर विथ विच यू कैन कंपेयर द थिंग्स, राइट? कैसे मेरे को पता चलेगा ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये पांचवा है, 10वां है, ये 25 है? ऐसे मेरे को कैसे पता चलेगा? अगर मैं कोई मेट्रिक यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेट्रिक क्या होता है? रिलेवेंस स्कोर. व्हाट इज रिलेवेंस स्कोर? रिलेवेंस स्कोर विल यूजुअली टेल यू कि आपका जो सर्च है वो कितना रिलेवेंट है. ओके, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड. एज द नेम सजेस्ट, आपका जो डॉक्यूमेंट है और आपका जो क्वेरी है, मतलब जो आपके क्वेरी का डॉक्यूमेंट ने आंसर दिया है, जो आप मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट टॉप 25 में से ले रहे हो, हाउ रिलेवेंट इज दैट? ओके, सो इट इज बेसिकली रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1. अगर आपका रिलेवेंस स्कोर लेके इफ इट इज क्लोजर टू 1 देन इट्स यूजुअली गुड. तो बेसिकली वो क्या करेगा, हर क्वेरी और हर डॉक्यूमेंट का, मेरे पास 25 डॉक्यूमेंट है, एक यूजर क्वेरी है, हर क्वेरी के साथ डॉक्यूमेंट का रिलेवेंस स्कोर चेक करेगा. ओके, और ये जो स्कोर होता है, ये जो स्कोरिंग मैकेनिज्म होता है, उसमें बेसिकली इट विल कंसिडर द सिमेंटिक मीनिंग. ओके, सो स्पार्स रिट्रीवल में अगर हम लोग BM25 वगैरह देखेंगे तो सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर नहीं होता, बट डेंस रिट्रीवल में होता है. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, करेक्ट? तो सिमेंटिक मीनिंग एज इन कि इट इज बेसिकली what do you say, it will try to understand the क्या बोलते हैं meaning of two similar things with the notion of some different external factor. जैसे मैंने बोला man and king, queen and woman, there is no keyword similarity. I mean, you could not look for keyword similarity, you will look for the semantic similarity. So man and king are related through notion of gender, woman and queen are related through notion of gender, man and king are related through notion of say deep voice, woman and queen are related to some other voice,
man and king are related with some weird feature and so on. There are different. These can be these characteristics can be identified as the features. Okay, so basically this can be. I mean, this is basically semantic similarity. तो ये जो कोहेरी रैंकर है, it's a language model basically. They have trained multiple language models for more than 100 languages, and ये re-ranker जो होता है, it tries to calculate the relevance score on the basis of semantics, and फिर डॉक्यूमेंट्स को री रैंक किया जाता है. जो भी टॉप का डॉक्यूमेंट है, इट कम्स एट द टॉप, जो लास्ट वाला है वो लास्ट पे आएगा. एंड बस उसको आप फिर मतलब जैसे यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर आउट किया था. देन मैं सारों को मतलब विद द हेल्प ऑफ क्वेरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉरी, दिस इज द इनिशियल डॉक्यूमेंट. यहाँ पे आपका फर्स्ट रिजल्ट्स आ रहा है. सेकेंड स्टेज में आई एम जस्ट मेकिंग अ री रैंकिंग. तो मैंने टॉप 100 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए थे, और उसके बाद मैंने इन सबको री रैंक करके आई गॉट दी इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स. और फिर मैं इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स को एज अ डॉक्यूमेंट एज अ कंटेक्स्ट करके दे रहा हूँ मेरे एलएलएम को. एंड देन आई एम जस्ट आस्किंग माय एलएलएम टू रिटर्न मी एन आंसर. ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेरीज? व्हाई वी नीड टू री रैंक द डॉक्यूमेंट्स? बिकॉज मैंने बोला ना, जैसे टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स मैंने फर्स्ट स्टेज में एक्सट्रैक्ट किए हैं. अगेन दे माइट नॉट बी वेरी मच रिलेवेंट, राइट? सो फॉर दैट रीजन हम लोगों ने उस पर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फिल्टरिंग ऐड कर दिया. मतलब एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्या बोलते हैं फिल्टर, कि पहले 25 हम लोगों ने कर लिया फिल्टर, बट नॉट नेसेसरी 25 के 25 सेंसिबल पिक्स थे. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एडवांस रैंकर यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लाइक prioritize these documents कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, and so on the basis of relevance. Yeah, the point is then we can reduce it to top 10 or top 5, which is correct. I'm not saying wrong to this, but point is अगर आप top 25 को extract करते हो तो you are basically eliminating that chance जहाँ पे आप अगर आपने सिर्फ top 5 extract किया, okay, और top 5 में बहुत सारा repetitive content है, okay, then your answer will not be a fruitful answer or a complete answer. राइट? सो आप बेसिकली क्या करते हो, यू आर टेकिंग लाइक मोर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड आउट ऑफ दोज मोर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स let me answer it. Okay, so uh, okay, so we'll just take the question afterwards. Sorry, I just thought this was a simple one question. I will answer each and every question. Fine, so do we use two LLMs? One is free generation, other than yes. So ये मतलब जो है ना, what do you say, रफी, हाँ, ये जो रीरैंकर है ना, वो अपने को मतलब खुद से एलएलएम का मतलब कॉल करके उसको मतलब और ये नहीं करना है, एलएलएम यूज नहीं करना है उसके लिए. देयर इज अ डायरेक्टली अवेलेबल रीरैंकर. आई मीन उसका एपीआई जैसे आप हिट करते हो वैसे यू ऑलरेडी हैव दैट. इट इंटरनली यूजेस दैट एलएलएम एंड यू डोंट हैव टू लाइक fetch the LLM for it. Ranking is performed after every query every time. Sorry, I did not. Okay, fine. Sure. Any open source rankers which can be used for enterprise solution. Okay. I'm not very much sure about the open source. I like tried looking few of the re-rankers. Coher was one of them, which I thought, I mean, I just look for its documentation. It was free for like at least a one user if you are using as a single user. But for enterprise solution, we have to look for it. I mean, I can just pass it on the documentation of Coher and different re-rankers. You can just pick it out from it. Okay. सो ये था एडवांस रैक. आई होप आपको ये समझा. okay, इसमें आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द थियरी. तो मतलब देखो कैसे, मैंने अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेसिकली आप इस चीज को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो देयर आर जस्ट एपीआई कॉल्स. ओके, ये क्लासिकल मशीन लर्निंग जैसा नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत हेवी कोडिंग करना पड़े, कि आपने मतलब कॉलम के इम्प्यूटेशन के लिए कुछ अलग लिख दिया, फिर टेक्स्ट एंटराइजेशन के लिए कुछ अलग लिख दिया, एंड सो ऑन. दीज आर जस्ट एपीआई कॉल्स. आप ओपन एआई के मॉडल को कॉल करोगे, उधर से आप मतलब एक टेम्पलेट चेन तैयार करोगे, एंड सो ऑन. आई मीन इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. सो आई एम स्पेंडिंग माई मोर टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थियरी. क्योंकि इंटरव्यूज में अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछेगा, इट विल बी मोर लाइक फोकस्ड ऑन द थियरी ओनली. एंड आई मीन यू कैन जस्ट गेट योर एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग वेरी क्विकली. वो जो डोंट वरी, हम लोग उसको भी कवर करेंगे. इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू इग्नोर द एप्लीकेशन पार्ट, but I am spending a little more time on understanding the theory. Let me know if you have any doubts so that I mean I can address them. Okay. So let's move forward. Okay. तो अभी हम लोग आते हैं आज का सबसे मेन एजेंडा, जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जिसको हम लोग बोलेंगे
मॉड्यूलर रैक। ओके, चैट में क्या हो रहा है भाई? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कोडिंग। इस लेक्चर में वी विल आई विल बी शोइंग यू नोटबुक which is kind of a very basic notebook which will demonstrate all sort of methods which we are going to discuss in the session. And the next session we will be like working on the end-to-end application of that. Can you please summarize advanced RAG? हाँ हाँ, don't worry Rafi, I will cover everything. Can you please summarize the advanced RAG? हाँ तो मतलब बेसिकली एडवांस रैग में हम लोग वही करते हैं जो नाइव रैग है उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एक प्री रिट्रीवल और पोस्ट रिट्रीवल स्टेप ऐड कर देंगे। प्री रिट्रीवल, basically what we are doing is we are working on our query. We are basically like cleaning that query or modifying that query in a better fashion in order to LLM understand or digest that particular query. एंड इन द रिट्रीवल स्टेज हम लोग नाइव रैक जो अपने को बेसिकली टॉप डॉक्यूमेंट्स एक्सट्रैक्ट करके दे रहा था, हम लोग ने उसके टॉप ऑन टॉप ऑफ दैट ये बेसिकली मेड यूज ऑफ द एडवांस री रैंकर मेथड। तो वो री रैंकर क्या करेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स उसने एक्सट्रैक्ट किया है उसमें से भी चीजों को री रैंक करेगा। री रैंक करने के बाद आप फिल्टर करोगे उसमें से, मतलब टॉप 25-30 जो भी आपने सिलेक्ट किए थे फर्स्ट स्टेज में, आप उसको री रैंक करके उसका नया मतलब रिलेवेंस इंडेक्स निकाल के आओगे। जो रिलेवेंस आएगा आपका उसके ऊपर आप टॉप 5 या टॉप 3 डॉक्यूमेंट्स को चूज करोगे। एंड वो चूज करने के बाद बेसिकली दैट विल बी फीडेड एज योर कॉन्टेक्स्ट। तो सब चीजें सेम है, सिर्फ प्री रिट्रीवल और पोस्ट रिट्रीवल स्टेप हम लोगों ने ऐड कर दिए। ओके, हाँ यस रफी, डोंट वरी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। तो ये मॉड्यूलर रैक का बेसिकली एक एक फ्लो पैटर्न है। नाउ इन दिस केस ये मतलब मैंने खुद से नहीं लिखा, ये जो मैंने आप लोगों को उस दिन जो रिसर्च पेपर दिखाया था ये वही रिसर्च पेपर से इमेज मैंने उठाया है। तो बेसिकली इफ यू जस्ट लुक एट इट, देयर आर मल्टीपल यू नो स्टेप्स और से स्टेजेस। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, इंडेक्सिंग हो गया, रिट्रीवल हो गया, पोस्ट रिट्रीवल हो गया, ऑर्केस्ट्रेशन हो गया, जनरेशन हो गया, then you have pre-retrieval. These all are the modules of modular rack. So उसको modular rack क्यों बोलते हैं? एडवांस रैक में we used similar method as of a naive rack. Okay? नाइव रैक में जो चीज यूज किया था उसके जैसे हम लोगों ने एडवांस रैक में यूज किया, सिर्फ प्री रिट्रीवल और पोस्ट रिट्रीवल स्टेज ऐड कर दिया। करेक्ट। तो उसके बाद बेसिकली people understood कि for different stages they can create some different modules. Okay, तो मॉड्यूलर रैक में हम लोगों ने मतलब ये लोगों ने क्या कर रहे हैं ये लोग कि दे आर क्रिएटिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स। ओके, तो ये फर्स्ट मॉड्यूल आपने देख लिया, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। विल जस्ट ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी मॉड्यूल इन डेप्थ, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ बेसिक डायग्राम। तो फर्स्ट मतलब मॉड्यूल इज इंडेक्सिंग, देन यू हैव pre-retrieval, then you have retrieval, then you have post-retrieval, then you have generation, then you have orchestration. और हर मॉड्यूल के अंदर देयर आर डिफरेंट सब मॉड्यूल्स, आप उसको बोल सकते हो कि इंडेक्सिंग के अंदर यू हैव चंक ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देन प्री रिट्रीवल में यू हैव क्वेरी राउटिंग, क्वेरी एक्सपांशन, क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेरी कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। In the retrieval, you have retrieval selection, retrieval tuning. In the post retrieval, you have re-ranking methods as we compared in the advanced rack, compression, selection. Then in the last step, you have orchestration where you are using scheduling on the basis of different rules, and then you are also making use of some sort of fusion methods. Okay. अगर आपको रैग एप्लीकेशन को ट्यून करना है तो देयर आर डिफरेंट व्हाट यू से फाइन ट्यून methods available. One is retriever fine tuning, other is generator fine tuning, and then this is a kind of a hybrid fine tuning strategy. So basically these are the tuning strategies जिसमें हम लोग जैसे आप रिट्रीवर को फाइन ट्यून कर सकते हो, जनरेटर को फाइन ट्यून कर सकते हो, एंड देन देयर आर ड्यूअल मतलब दोनों को या हाइब्रिड तरीके से फाइन ट्यून करने की स्ट्रेटेजीज भी अवेलेबल है। ओके, then there are different inference methods. Okay, तो inference में you have sequential pattern, conditional pattern, branch pattern, loop pattern and so on. तो मॉड्यूलर रैक जो है, इन डेप्थ अगर हम लोग इसकी बात करने जाएंगे तो इट कंसिस्ट मल्टीपल थिंग्स। ओके, इट कंसिस्ट मल्टीपल थिंग्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर क्वेरी, जो हम लोगों ने एडवांस रैक में थोड़ा सा हैंडल किया था विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू से प्री रिट्रीवल मॉडल। Then it tries to like address the pre-retrieval issues.
Okay, it tries to address the retrieval issues. It tries to address the post retrieval issues. जो भी मतलब आपने एडवांस रैंक में what the help with the help of re rankers आपने इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग उसकी बात करेंगे. ओके, देन यू हैव जनरेशन स्टेज में क्या क्या इश्यूज आते हैं उसको उसने एड्रेस करने की कोशिश किया. देन यू हैव ऑर्केस्ट्रेशन. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स. सो अगर आपको कोई मतलब इंटरव्यू में पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट मॉड्यूलर रैक, देन यू हैव टू जस्ट keep this image inside your mind, and you have to, I mean, you can just explain each and every point out of that out of this particular image to your interviewer or your audience. तो इसमें बेसिकली रैक का पूरा सब कुछ कवर हो जाता है. ओके, दे नाउ एवरी डे people are coming up with different newer things in order to I mean do better indexing, better retrieval, better post retrieval, better generation, better orchestration and so on. तो ये चीजें धीरे धीरे तो इम्प्रूव ही करते जा रही है. बट दिस इज दी व्हाट यू से बेस आर्किटेक्चर which was like displayed in that particular research paper जो मैं आज explain करने जा रहा हूँ. There are multiple other things apart from this as well, आप जो ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे which are related to RAG. So yeah, we'll just start our discussion on this. तो सबसे पहला जो चीज है that is your indexing. So what do we mean by indexing? Can anyone tell what do we mean by indexing? Okay, anyone? Do you want to give it a try? Okay, embedding. It's sort of embedding. करेक्ट. तो इंडेक्सिंग होता क्या है, आपका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप उसको सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड देन यू आर बेसिकली स्टोरिंग इट at its say representative ID in some sort of a database. So that is basically your indexing वाला step, which is your first step. Okay. So इसमें हम लोग क्या क्या methods use कर सकते हैं, different methods. Okay. So there are methods like chunk optimization. Then you have semantic splitting, you have multi-representation indexing, you have specialized embedding, and then you have hierarchical indexing. Okay. Now ये जो basically a diagram है, this is not diagram which I have drawn. Basically this is there on the LangChain code repository जहाँ से आपको ये मिल जाएगा. Okay. So they have shown us different approaches in order to work on indexing. Okay. तो सबसे पहले चंक ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं. तो चंक ऑप्टिमाइजेशन ओके. Okay, Fayaz, did you have any issue? Let me know. You raised your hand, so I'm asking. Yeah, you are correct. Prajwal, you are correct. Soumya, you are correct. Session started on 8 p.m. Modular and advanced seems similar. So yeah, they are kind of similar. But the point is, pre-retrieval and post-retrieval, you are not getting anything. Sure, you can just watch the previous sessions, and I hope you will get the things after that. So there is difference as in main difference ये है कि आपने बहुत सारी चीजें ऐड की है. So there are different methods. Okay. At the end तो हम लोग को अगर रैक को फाइन ट्यून करना है या रैक को okay, sure. Let me just address it. Can you just tell me what you are not able to get? I mean, I will try to address it like in a short span. But let me just what is that? Answer the same Monk's question. So एट द एंड अगर हम लोग को रैक पे काम करना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूजर क्वेरी को वी कैन जस्ट इम्प्रूव. वी कैन वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन और प्रॉम्प्ट व्हिच वी हैव गिवन. वी कैन वर्क ऑन द रिट्रीवल स्टेज. वी कैन वर्क ऑन जनरेशन स्टेज. तो जो एडवांस रैक है इसमें भी ट्राइड वर्किंग ऑन द प्री रिट्रीवल एंड द पोस्ट रिट्रीवल स्टेज. बट इसमें हम लोग और भी जहां जहां पे वी विल बी एबल टू लाइक इनकॉर्पोरेट द ट्रेनिंग पार्ट, जिससे हम लोग अपने आंसर को और अच्छे से फाइन ट्यून कर पाएंगे, वो वाली सारी चीजें हम लोग मॉड्यूलर रैक में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. अल्दो बट दे आर काइंड ऑफ सिमिलर. सो आई मीन री रैंकर्स हम लोग वहां पे भी यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज करेंगे. तो it's not a very big difference in between these. It's like we are basically using the different what do you say approaches. So yeah, Prajwal has answered correctly. Small processor are converted into
मॉड्यूल्स। तो जैसे मैंने बोला था प्रीवियस, ये सब सेम चीजें हैं जो आप पोस्ट रिट्रीवल में यहाँ पे री रैंक देख रहे हो। तो मॉडल बेस्ड होता है, एलएलएम बेस्ड होता है, रूल बेस्ड होता है, ये हम लोगों ने एडवांस रैंक में भी कवर किया था। देन प्री रिट्रीवल स्टेज में ये सारी चीजें तो नहीं है जो एडवांस रैंक में हम लोगों ने नहीं यूज की थी। ओके, but there were few things like you could have used to rewrite in the advanced rag as well। तो ये सब सेम ही है, बस हम लोगों ने इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में स्प्लिट कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक कि एडवांस रैग और मॉड्यूलर रैग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना ही चाहिए। इट्स लाइक हम लोग और चीज को करने के अलग अलग तरीके देख रहे हैं। ओके, तो यूजर क्वेरी को कैसे हैंडल करना है उसके अलग अलग तरीके जो मॉड्यूलर रैग अपने को दे रहा है, एंड सो ऑन। ओके, let's just come back to it. So, okay. No, you're correct, Muktal. So if we are just training our LLM on custom data, it's not RAG. It's basically fine tuning. जो आप LLM को कस्टम मतलब कस्टम डेटा आप अगर नॉलेज बेस में डाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ एम्बेडिंग्स, एंड आप LLM को ऐसे ही रख रहे हो एंड यूज यूर जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग द एक्सटर्नल डेटा, तो बेसिकली वो रैग होता है। इट्स नॉट ट्रेनिंग द LLMs, आई वुड से। इट इज बेसिकली आपका LLM पहले से ही ट्रेंड है, आप उस पे क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल नॉलेज बेस को सिर्फ ऐड कर रहे हो। so दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। ट्रेनिंग अलग प्रोसेस होता है और एडिंग इज बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस। So when would you use advanced RAG or when modular? Is it situation dependent? I mean, I won't say yes. So they are not situation dependent. Basically, it's like an advanced strategy. Okay, so advanced strategy जो है आपका, it has some cost. Okay, so आप जब भी कोई एडवांस मैकेनिज्म यूज करने जाते हो तो इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग इन नेचर। Okay, it's not an entirely situation dependent thing. Obviously, modular RAG will offer you more advantages when you are comparing with naive RAG and advanced RAG, but some sort of complexity will get involved. Okay, so chunk optimization की हम लोग बात करेंगे। तो basically we are breaking down the content in smaller and more manageable units फॉर फास्टर इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल। तो उसमें अलग अलग मेथड्स है, जैसे स्मॉल टू बिग एक मेथड है, स्लाइडिंग विंडो एक मेथड है। तो बेसिकली चेक ऑप्टिमाइजेशन में करते क्या है, हम लोग के पास एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट कॉर्पस है। वी आर जस्ट स्प्लिटिंग दैट थिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स, एंड बेसिकली हम लोग उन यूनिट्स को बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू सम सॉर्ट ऑफ एम्बेडिंग्स। सो इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। उसमें दो मेथड्स है एग्जांपल के लिए, स्मॉल टू बिग एंड स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो में होता क्या है, हम लोग मतलब उस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चंक्स। वो चंक्स को हम लोग कैसे करेंगे, विंडो के साथ स्लाइड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स के लिए वी हैव दी फर्स्ट विंडो, फॉर से 192 टू 390 के लिए अलग अनदर विंडो, से 390 टू 590 के लिए अनदर विंडो, एंड सो ऑन। सो वी आर बेसिकली स्लाइडिंग आवर विंडो and we are basically creating smaller chunks of the bigger document on the basis of text size or say character size and so on। ओके, स्मॉल टू बिग एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन मेथड होता है, चंक ऑप्टिमाइजेशन मेथड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वी विल ट्राई टू लाइक कन्वर्ट दैट एंटायर डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉलर चंक्स एंड बिगर चंक्स। ओके, तो स्मॉलर चंक्स जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन, एंड बिगर चंक्स जिसको आप स्प्लिट कर रहे हो दे विल बी यूज्ड फॉर सम डिफरेंट व्हाट यू से ऑपरेशन। ओके, तो ये एक अनदर अप्रोच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चंक ऑप्टिमाइजेशन। ओके, हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। इंडेक्सिंग में हम लोग क्या ही करते हैं कि हम लोग उस टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स। आप एक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ को या पूरे के पूरे पेज को यू कैन जस्ट कन्वर्ट दैट इनटू एम्बेडिंग विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस एम्बेडिंग और वर्ड एम्बेडिंग एंड सो ऑन, और एल्स यू कैन चूज टू ब्रेक डाउन दैट कंटेंट। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, नाइव रैग में हम लोग ये चीजें एज इट इज पास कर रहे थे, correct? But the point is now you understood key if you want to like say make use of better indexing practices, you can just break down that chunk into smaller units. Okay, so how you can do that, you can use a method which is known as small to big method, or you can use approach which is sliding window approach। Okay, now अगर आप chunk optimization करते हो तो इसमें issue क्या आएगा,
कि बेसिकली देयर विल बी मोर कॉम्प्लेक्सिटी, मोर कॉस्ट इन्वॉल्व। अच्छी बात क्या है कि आपने बड़े वाले डॉक्यूमेंट को छोटे छोटी चीजों में स्प्लिट कर दिया, तो बेसिकली आपका जो प्रोसेस था इंडेक्सिंग का दैट विल बी फास्टर, रिट्रीवल का जो प्रोसेस था दैट विल बी फास्टर, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज कम हो रहा है, तो उसके जो कैलकुलेशंस होंगे वो भी दैट विल बी अ लिटिल इजी इन द व्हाट यू से mathematical, from terms of mathematical complexity and so on. Okay, so that is all about chunk optimization. Let's talk about semantic splitting. Okay, तो semantic splitting में क्या होता है कि हम लोग फिर से कॉर्पस को मतलब तोड़ना चाहते हैं, बट बेसिकली हम लोग इस टाइम पे मीनिंग के बेसिस पे या फिर सिमेंटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे चीजों को तोड़ेंगे। ओके, सो हम लोग के पास अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स है, चंक ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया, स्लाइडिंग विंडो से पैराग्राफ को ब्रेक किया, स्मॉल टू बिग स्ट्रेटेजी से ब्रेक किया। सिमेंटिक स्प्लिटिंग में वी विल नॉट बी कंसिडरिंग द सीक्वेंस, हम लोग क्या करेंगे, सिमेंटिक मीनिंग पे उस चीजों को ब्रेक करेंगे। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब हम लोग को दो पैराग्राफ्स को ब्रेक करना है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में इट इज टॉकिंग अबाउट, आई मीन सो नॉट टू पैराग्राफ, से वी हैव एंटायर वन पैराग्राफ, बिग पैराग्राफ। ओके, एंड हम लोग का आधा जो टेक्स्ट है इट इज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, आधा जो टेक्स्ट है इट इज टॉकिंग अबाउट से पॉलिटिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, नाउ वी नो कि एक जगह पे क्रिकेट की बात हो रही है, दूसरी जगह पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, सिमेंटिकली दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को विल डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट चंक्स, छोटे छोटे टुकड़े, जिसमें पहला जो पीस होगा दैट विल टॉक अबाउट क्रिकेट, सेकेंड पीस विल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बिकॉज हम लोगों ने दो अलग अलग मतलब सिमेंटिकली जो अलग अलग मीनिंग होने वाली चीजों को सेपरेट कर दिया, उसकी वजह से हुआ क्या कि अब आप जब रिट्रीव करने जाओगे तो रिट्रीवर क्या देखेगा, क्योंकि फर्स्ट जो आपका चंक था उसमें इट इज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। ओके, सेकंड जो आपका चंक था इट इज एबल टू लाइक अंडरस्टैंड दिस अबाउट पॉलिटिक्स। तो आपका जो रिलेवेंस स्कोर होगा यूजर क्वेरी के साथ आप जब चेक करने की बात करोगे, या फिर आप सिमेंटिक जो मीनिंग कैप्चर करने की बात करोगे, या फिर आप कोई सिमिलैरिटी स्कोर चेक करने की बात करोगे, तब अगर आपका जो एंटायर टॉपिक है, एंटायर जो चंक इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट, देन यूजर क्वेरी विल बी, I mean, correctly answered in that case. If you are asking about some questions about cricket, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्रिकेट का क्वेश्चन पूछा है एज अ यूजर, और मेरा पूरा एंटायर चंक है, ओके, उसमें क्रिकेट भी है और पॉलिटिक्स भी है, तो क्या होगा, जब आप उसका सिमिलैरिटी चेक करने जाओगे, सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी विल गेट अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि मेरा जो एंटायर कॉर्पस है दैट हैज क्रिकेट एज वेल एज पॉलिटिक्स, बट मेरा क्वेश्चन जो है वो क्रिकेट के रिलेटेड है, करेक्ट? जस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स उसके अंदर आ गया वो सेम चंक में, तो नाउ इट इज काइंड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज कि भाई ये सच में मेरा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है या नहीं। ओके, तो सिमेंटिक स्प्लिटिंग में क्या कर दिया, क्रिकेट वाली चीज अलग कर दी, पॉलिटिक्स वाली अलग कर दी। अभी अब क्वेश्चन सिमिलैरिटी चेक करने जाएगा या फिर कोई भी सिमिलैरिटी इंडेक्स चेक करने जाएगा, तब उसको दिख रहा है ये वाला जो चंक है दैट इज पर्टेनिंग टू क्रिकेट, दिस इज पर्टेनिंग टू पॉलिटिक्स। ओके, नाउ इट विल बी एबल टू गिव यू द मोर करेक्ट आंसर। अगेन इसमें क्या हो रहा है, आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो सॉर्ट ऑफ, कि मतलब आप ज्यादा ऑपरेशंस कर रहे हो एंड सो ऑन, तो कॉस्ट भी थोड़ा आपका लाइक इट विल अफेक्ट। अगर आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ यू आर जस्ट गिविंग इट एट वन गो, यू आर नॉट मेकिंग मल्टीपल ऑपरेशंस एंड सो ऑन। ओके, सो हर जगह पे कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी विल कम इनटू पिक्चर। तो सिमेंटिक स्प्लिटिंग ये होता है। तो अगर आप मतलब टॉपिक शिफ्ट्स पे चीजों को स्प्लिट कर रहे हो, तो बेसिकली यू विल बी left with the text which is more fine tuned or precise in nature. Okay, then you have third thing which is known as multi representation indexing. Okay, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, द पॉइंट इज हम लोग इसको एक जो कंटेंट है वी विल ट्राई टू लाइक व्हाट यू से रिप्रेजेंट दैट कंटेंट with different set of representations. Okay, so you can see there are multiple embeddings, okay, with which you can understand or you can just convert your text into numerical format. It might be based on phrases, it might be based on keywords, it might be based on semantic embeddings and so on. Okay, तो multi representation indexing में आप जैसे नाम बता रहा है वो, you are trying to represent your document corpus with the help of multiple
Hello guys, I'm so sorry. Actually, I was facing some net issue, got thrown out of the session. Let me just get back to the topic. Is my screen visible and am I audible? Thank you. Okay, so we were talking about the multi representation indexing. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सेम कंटेंट को, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मल्टी रिप्रेजेंटेशन इंडेक्सिंग को, तो बेसिकली आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द सेम इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन. वो कीवर्ड रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, फ्रेजेस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, सिमेंटिक एम्बेडिंग्स यूज कर सकते हो, वर्ड एम्बेडिंग्स यूज कर सकते हो, सेंटेंस एम्बेडिंग यूज कर सकते हो, एंड सो. Okay, so this is basically a way of index your data in such a way that you have multiple representation for same content, और same चीज के लिए आप multiple times अलग अलग वे में represent करते हो. हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे शायद ये हो सकता है कि बेसिकली आपका जो context understanding है that might get preserved with the help of different different embeddings. Okay, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज या ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो with this kind of a method where you are trying to represent your same content with different form of representations. Then we can just talk about specialized embeddings. So specialized embeddings में हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं कि अभी हम लोग का जो रैक का पूरा जो ऑपरेशन है, इट इज बेस्ड ऑन एन आइडिया कि आपको करना क्या है. इसमें आपको एक्सटर्नल डेटाबेस या फिर आपका जो डोमेन स्पेसिफिक डेटाबेस है वो नॉलेज आपको एलएलएम के साथ इनकॉर्पोरेट करना है, राइट? तो आपका जो एक जेनेरिक एम्बेडिंग होता है, ओके, जेनेरिक एम्बेडिंग या जेनेरिक आपका जो सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग होता है, दैट इज लिटिल बिट स्टैटिक इन नेचर. सो आपको, अगर मतलब आपने नीतीश सर का एक वीडियो देखा होगा, यू आर आई मीन कंटेक्चुअलाइज एम्बेडिंग नाम की एक चीज होती है. ओके, कंटेक्चुअलाइज एम्बेडिंग क्या, आप किसकी बात करते हैं कि जहां पे जैसे वो कंटेक्स्ट आएगा उसके हिसाब से वो एम्बेडिंग डायनामिकली क्रिएट होगी, राइट? तो स्पेशलाइज एम्बेडिंग में हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डू नॉट मेक यूज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिक एम्बेडिंग्स. ओके, ट्राई टू यूज सम कस्टम एम्बेडिंग्स. तो वो कस्टम एम्बेडिंग्स कौन से रिलेटेड होंगी? अभी जैसे मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल मेक श्योर इज जो मैं एम्बेडिंग्स मॉडल बनाऊंगा मेरा, जिसमें मेरे सारे वर्ड्स के एम्बेडिंग सिमेंटिक रिलेशनशिप्स कैप्चर होंगे, तो उस मॉडल को आई विल जस्ट ट्रेन इट ऑन अ क्रिकेट कॉर्पस डेटा, या फिर क्रिकेट का जो भी कमेंट्री का डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आई विल जस्ट ट्राई टू ट्रेन ऑन दैट. ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आई एम मेकिंग यूज ऑफ कस्टम एम्बेडिंग्स व्हिच इज डोमेन स्पेसिफिक. ओके, तो अगर आप डोमेन स्पेसिफिक एम्बेडिंग को यूज करोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन विल बी कैप्चर्ड इन मोर एक्यूरेट फैशन. तो अभी जैसे मैं क्रिकेट एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैंने क्रिकेट की क्वेरी पूछना चाहता हूँ. ओके, जो मेरा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी मच क्लोज in order to understand like dynamics about like keywords or dynamics about this game. Since मेरा जो embedding model था वो क्रिकेट के अराउंड ही मैंने ट्रेन किया in order to come up with a better embeddings or better numerical representation which will be able to capture the essence of cricketing words. Okay, तो हम लोग specialized embeddings का यूज कर सकते हैं. There are different advanced embedding models, like you can make use of Colbert, which is say one of the very nice model, एम्बेडिंग मॉडल है. ये भी आप मतलब इससे यूज कर सकते हो. बेसिकली यू हैव दिस मॉडल इन, आई थिंक योर लैंगचेन प्री ट्रेनिंग, सॉरी हगिंग फेस प्री ट्रेन में ये मॉडल है. आई एम वेरी मच नॉट वेरी मच श्योर, बट यू कैन मेक यूज ऑफ कॉल, बट दिस इज एडवांस embedding model. And yeah, that will help you in order to grab or understand the query context in a better fashion. Then we can talk about hierarchical indexing. ओके, सो हायरार्किकल इंडेक्सिंग में होता क्या है, एज यहाँ पे मतलब जैसे लिखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है, वी आर बेसिकली स्प्लिटिंग दैट डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज. सो व्हाट आर हायरार्कीज? सो से मेरा पूरा एक जो मतलब पेज है उसमें मेरे पास से आई हैव डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. लाइक first topic is related to cricket, other topic is related to politics, third topic is related to say singing, fourth topic is related to some different topic, and so on. Okay, तो अभी मैं क्या करूंगा, I will just create a hierarchy which is known as topic hierarchy. तो topic hierarchy में क्या हो रहा है मेरा,
I'm just trying to list down all the important topics. This first topic is my cricket, second topic is my politics, third topic is some blah 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 and so on. I mean, there are different topics, okay, which are being listed in particular document. So I'm just trying to like organize my content in different hierarchical representations. Okay, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, again it's some sort of what you say similar to what we did with semantic splitting. Semantic splitting में भी हम लोगों ने वही किया था, but हम लोगों ने यहाँ पे जो splitting किया था that was entirely on the topic shifts. यहाँ पे we are making use of categories and subcategories. So categories and subcategories might be anything. It can be any hierarchy. It can be any hierarchy at say डिफरेंट ग्रैनुलरिटीज. जैसे आपका डेटा कोई स्टेट लेवल पे है, कोई डेटा प्रोडक्ट लेवल पे है, कोई डेटा से एरिया रिलेटेड है, कोई डेटा टेस्ट रिलेटेड है, कोई डेटा स्पोर्ट्स रिलेटेड है, कोई डेटा कोई पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड है. तो वी आर जस्ट गोइंग टू व्हाट यू से इंडेक्स दैट डेटा एज पर दी हायरार्की. जो अगर आप चीजों को हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, देन बेसिकली आप जब रिट्रीव करने जाओगे विद द हेल्प ऑफ रिट्रीवर, रिट्रीवर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और से फाइन पिक द रिलेवेंट काइंड ऑफ मटेरियल from the what do you say vector store in a more precise fashion. Okay, तो ये चीजें जो है, इन चीजों मतलब ये चीज आपकी इंडेक्सिंग में कवर होती है. तो इंडेक्सिंग में वी हैव टॉक्ड अबाउट चंक ऑप्टिमाइजेशन. सो मैंने जैसे बोला मोटा मोटा तौर पे हम लोग इंडेक्सिंग में करते क्या है, इंडेक्सिंग में हम लोग चीजों को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं. ये सबसे पहली स्टेप है जहाँ पे आप एक्सटर्नल नॉलेज डेटाबेस लेके आ रहे थे अभी तक नॉर्मल रैक में या एडवांस रैक में. आप उस नॉलेज बेस को मतलब यू आर जस्ट कन्वर्टिंग दैट इनटू सम फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग्स एंड स्टोरिंग इट इन सम सॉर्ट ऑफ वेक्टर डेटाबेस. राइट. तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बोल रहे कि हाँ यही चीज अपने को करना है, बट उसके लिए भी हम लोग कुछ और अच्छे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम लोग उस डेटा को एज इट इज मतलब वेक्टर कन्वर्जन के लिए नहीं भेजेंगे. हम लोग उसको क्या करेंगे, वी कैन मेक यूज ऑफ मेथड्स सच एज चंक ऑप्टिमाइजेशन है, सेमांटिक स्प्लिटिंग है, मल्टी रिप्रेजेंटेशन इंडेक्सिंग है, स्पेशलाइज एम्बेडिंग्स है, हायरार्किकल इंडेक्सिंग है. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट को before storing it in the say vector database, we are just making it say arranged in some sort of proper format which retriever can use while retrieving the query ka similar answer from the vector database store. Okay, so these are the methods in which you can handle the indexing. So let's move forward. So then comes the method of pre-retrieval. ये मेथड हम लोगों ने एडवांस रैग में भी कवर की थी. सो बेसिकली हम लोग ये मेथड को क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था एडवांस रैग के टाइम पे भी कि हम लोग का जो यूजर का क्वेरी है दैट माइट बी रिटन इन अ वेरी पुअरली वर्ड्स. ओके, नॉट एवरीवन इज वेरी मच एक्सपर्ट विद लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक क्वेरीज. ओके, जैसे मैंने कोई बेसिक क्वेरी लिखा कि मेरे को कोड में एरर है इसका सॉल्यूशन दो, that is so very basic. That is not a very complex query. But if say some user is trying to ask a very complex query, right, and if it is written very poorly, then boss retrieval के जो system है उसमें I mean that retrieval will face issues. It will try to give some answer on the basis of context which it understood. But again, because it was poorly written, won't be able to give you the most accurate answer. ओके तो ये बात उसकी हो रही है जब यूजर का क्वेरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. तो उस केस में अगर इफ इज नॉट राइटिंग इट इन अ से प्रॉपर लिंग्विस्टिक मैनर और प्रॉपर लिंग्विस्टिक फैशन, फिर आपके रिट्रीवल में बहुत इश्यूज आएंगे. ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने एडवांस रैग में भी प्री रिट्रीवल स्टेज का जिक्र किया था. यहाँ पे भी वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री रिट्रीवल स्टेज. तो प्री रिट्रीवल स्टेज में हम लोग मॉड्यूल में क्या क्या काम करते हैं, वी ट्राई टू वर्क ऑन क्वेरी एक्सपांशन, query transformation, then there is hide, there's query routing, there is query construction. Okay, we'll just try to look at each and everything in a little depth. So query expansion में हम लोग क्या करते हैं, there are multiple things. Okay, we make use of multi-query, we make use of sub-query, we use of proof, which is nothing but chain of verification. Okay, अब ये हर चीज होती क्या है. Okay, मैंने अभी क्या बोला, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि यूजर का क्वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स है या फिर बहुत खराब तरीके से लिखा है. ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्वेरी एक्सपांशन का मेथड यूज करूंगा. नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इन दिस काइंड ऑफ स्टेप वी आर ट्राइंग टू एड्रेस यूजर्स क्वेरी. ओके, तो क्वेरी एक्सपांशन में क्या करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ अप्रोच विच नोन एज अ मल्टी क्वेरी. तो मल्टी क्वेरी में होता क्या है कि
एक सिंगल क्वेरी है उसको मैं मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट अदर क्वेरीज में डिवाइड करूंगा। ओके, मैंने बहुत कुछ तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी मतलब आई हैव रिटन इट। सो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पूरा क्वेरी एलएलएम को पास करूंगा तो इट मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर क्वेरी, सिंस क्वेरी हैज मल्टीपल सब अदर क्वेश्चंस एज वेल, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उस एक पूरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आई विल ट्राई टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, एंड बेसिकली मैं हर क्वेश्चन के लिए आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एन आंसर, एंड देन basically I mean that is what you say my modification in order to break down that complex query into multiple different queries. So वो होता है मल्टीपल क्वेरी अप्रोच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई है जो एलएलएम को शायद ना समझे, हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर क्वेरीज और से मल्टी क्वेरीज। ओके, देन यू हैव सब क्वेरी। Okay, so subquery is some sort of similar to multi-query only. So subquery में हम लोग क्या करते हैं कि we are trying to find out different different sub questions of a question. Okay, multi-query में it might not be just a sub question. Now understand difference between multi-query and subquery. Subquery is basically finding out sub questions, okay, out of a main question. While multi-query में क्या होता है, these questions might not be related with each other. They might be a little different questions. One question might be talking about politics, one question might be talking about cricket, and so on. I'm just distributing them into different orders. But subquery में what I'm doing is I'm kind of like putting out the simpler sub questions using a least to most prompting. Okay, there is this is one of the method which is used for finding the sub queries. Then there is one more method which is known as COVE, which is chain of verification. And हम लोग इसमें क्या करते हैं, we will try to address the problem of hallucination. रिट्रीवर hallucination नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। होता क्या है कि आपका जो रिट्रीवर है, when it is trying to fetch the top end documents with the help of some sort of a say similarity metric or some sort of an index, okay, so it faces the problem of hallucination if the data is not proper or if the corpus is not proper, right. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब क्वेरीज को हम लोग एक्सपांड करते हैं, एलएलएम उनको वैलिडेट करता है। ओके, इस पूरे जो प्रोसेस है उसको बेसिकली चेन ऑफ वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने जो क्वेरीज एक्सपांड की है विद द हेल्प ऑफ मल्टी क्वेरी एंड सब क्वेरी को, एलएलएम विल ट्राई टू वेरीफाई और वैलिडेट दोस क्वेरीज। ओके, अभी हम लोग अगर ये क्वेरीज को वैलिडेट करते हैं तो बेसिकली वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि अपना जो एलएलएम है इट विल नॉट गेट लॉस्ट इन अ लूप। सो व्हाट इट मींस बाय गेटिंग लॉस्ट इन अ लूप इज बेसिकली, अगर मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो बेसिकली इट माइट गेट लॉस्ट इन अ लूप जहां पे इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, क्या रिट्रीव करना है क्या रिट्रीव नहीं करना है। बट बिकॉज चेन ऑफ वेरिफिकेशन थॉट चेन ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस इज देयर, it will be able to like try to address the problem of retrieval hallucination. Okay, तो उसके लिए वो क्या करता है, आपने जो भी क्वेरीज को एक्सपांड किया या फिर जो भी क्वेरीज को स्प्लिट किया है डिफरेंट डिफरेंट अदर क्वेरीज में, एलएलएम उसको वैलिडेट करता है, एंड देन it will try to like modify those query, and then perhaps it will use it for the retrieval mechanism going forward. Okay, this is about query expansion. Then we can talk about query transformation. Okay, query transformation एक ऐसी चीज होती है जहां पे हम लोग क्वेरी को मतलब एज द नेम दिस वी ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द क्वेरी। ओके, ट्रांसफॉर्म द क्वेरी हम लोग किस मेथड से कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो रीराइट इज वन ऑफ द मेथड। ओके, तो रीराइट में हम लोग क्या करते हैं कि हम वी कैन ट्राई टू मेक यूज ऑफ सम स्पेशलाइज्ड मॉडल्स। तो हम लोग एलएलएम्स को बोलते हैं कि ये जो क्वेरी है ना इसको रीराइट कर, मतलब मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि यार मैंने ना कुछ तो क्वेरी लिखने का कोशिश किया है बट आई एम नॉट एबल टू लाइक अंडरस्टैंड कि ये क्वेरी प्रॉपर है या नहीं। ओके, तो मैं बोलूंगा चैट जीपीटी को तू इसको अच्छे से फॉर्मेट करके दे मेरे को। तो मैं मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क सम स्पेशलाइज्ड मॉडल्स, ओके, इन ऑर्डर टू रीफॉर्मेट द क्वेरी। दैट इज वन ऑफ द अप्रोच। तो मतलब हम लोग एडवांस्ड मॉडल्स को मतलब प्रॉम्प्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रीराइट द क्वेरी। so अगर हम लोग की क्वेरी अगेन बेटर फैशन में है तो इट विल बी एबल टू कम अप विद अ बेटर आंसर। नाउ यू माइट आस्क कि अच्छा तो बट द प्रॉब्लम तो यही था ना कि मतलब यूजर की क्वेरी पुअरली रिटर्न थी, तो चैट जीपीटी को भी कैसे समझेगा ये चीज। तो बेसिकली फॉर दैट यू आर बेसिकली टेकिंग हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो आप क्या कर रहे हो इस केस में, यू आर जस्ट मेकिंग श्योर
कि हाँ मतलब मैंने आपको एक टेक्स्ट लिख के दिया, आई एम जस्ट आस्किंग चैट जीपीटी की तो अपने हिसाब से इसको एडिट करके दे दे. नाउ इट हैज गिवन मी समथिंग इन रिटर्न. आई एम गोइंग टू सी इट वेदर द क्वेरी इज करेक्ट और नॉट, and then perhaps basically I'll be using that query in say my what do you say RAG application. Okay, so that's how it will work. I will just try to see if the very query is proper or not. If it's not proper, then perhaps I will again prompt my LLM in order to give me better result and so on. Okay, so this is a rewrite method in which we prompt LLM in order to give the query reader in a say better retrieval fashion. Okay. Then there is one more approach which is known as hide. Okay, hide refers to hypothetical document embeddings. तो as the name suggests, it's hypothetical. तो LLM इसमें क्या करता है? LLM tries to create an hypothetical document. Now, what is an hypothetical document? So basically, it's not the actual document. It's some sort of an imaginary document. Okay? तो ये हम लोग जब उसको क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या करता है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है, it tries to find it with respect to some sort of a hypothetical document. Okay, so it will try to generate some sort of a what do you say, uh, not fake document, I will say some sort of a imaginary document, not imaginary is a wrong word, some sort of a hypothetically बोलते हैं hypothetical document, and उससे वो आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. ओके, तो ये जो मेथड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स. तो इसमें वी आर नॉट ट्राइंग टू लुक फॉर द एक्चुअल डॉक्यूमेंट, वी आर ट्राइंग टू रिट्रीव द आंसर basis on the hypothetical document which we have created. Okay, then there is one more method which is step back prompting. Okay, तो इस स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल जो एक आपका क्वेरी रहेगा उसमें मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा, आप उस चीज को कोई एक अलग क्वेश्चन में ब्रेक करोगे. okay, now what will be that different question. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्रिकेट का एग्जाम्पल देना है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई तो क्वेश्चन पूछा है कि टेल मी समथिंग अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, दिस इज माय क्वेश्चन. ओके, तो अभी व्हाट माय एलएलएम इज गोइंग टू डू इज इट इज गोइंग टू go in the document corpus and try to see whether it is able to find out some information related to cricket world cup 2023 or not. करेक्ट, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके पहले एक और एक क्वेश्चन पूछूंगा. आई मीन आई विल ट्राई टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ओके, which will able to help my LLM for sort of a say better understanding of the question. So what will be a step back question, so that might be related to say identify or say can you give me some documents which are related to cricket, or can you talk something about cricket. Okay, so first मतलब मेरा question original क्या था, I wanted some information on cricket world cup 2023. okay, मैं एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ and I am asking say high level conceptual question. Now 23 का जो information था 23 cricket world cup का, that was a specific question. Now I'm like getting back one more step and then I'm trying to ask a broader question which is related to cricket. Okay, so that is known as step back prompting. तो ये एक अनदर मेथड है जिससे आप बेसिकली प्री रिट्रीवल पे काम कर सकते हो. ओके, देन यू हैव different methods which are related to query routing and query construction. We'll try to see what is query routing. Okay, so query routing is basically routing your query to different RAG pipelines. अभी इसमें क्या होता है, there are two methods. One is metadata router, another is semantic router. Okay, तो metadata router में क्या होता है, आपका जो क्वेरी होगा ना, आपने metadata का आपको मतलब पता है क्या होता है. metadata में क्या होता है कि बेसिकली ना आप सिर्फ मतलब कंटेंट को स्टोर नहीं करते, यू विल ट्राई टू स्टोर अदर इंफॉर्मेशन. जैसे आप उसका आईडी हो गया, उसका लोकेशन हो गया, उसमें डिफरेंट एंटिटीज हो गए, वो सारी चीजें जो है वो जेसॉन फॉर्मेट में आप मेटाडेटा में स्टोर करते हो. किसी भी आपने मेटाडेटा को देखा होगा तो करेक्ट. तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू स्टोर अवर इंफॉर्मेशन इन और से क्वेरी इंफॉर्मेशन इन मेटाडेटा, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहा हूँ तो उसमें आई कैन जस्ट इनकॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन लाइक ईयर, आई कैन इंफॉर्मेशन
incorporate information about say sport which was played. So मैं JSON में यूजर क्वेरी तो डाल रहा हूँ, यूजर क्वेरी के साथ मैं ये भी लिख रहा हूँ कि लाइक स्पोर्ट, तो उसमें आई एम जस्ट मेंशनिंग क्रिकेट, इंडोर और आउटडोर आई कैन जस्ट मेंशन आउटडोर और इंडोर एंड सो ऑन. There are different fields I can use in order to understand basically how that metadata is in order to understand the question in better fashion. तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम लोग मेटाडेटा राउटर या फिल्टर का यूज करेंगे तो बेसिकली जो आपका रिट्रीवर स्टेज में आपको रिट्रीव करनी होगी इंफॉर्मेशन, that will be a relatively easy task. Why? Because we are filtering chunks which are based on keywords extracted from the query and metadata within the chunks. Okay. Second method is semantic routing. Okay. तो semantic routing में हम लोग क्या करते हैं, query को basically we are some sort of routing with respect to semantic information. Okay. तो क्वेरी राउटिंग एक ऐसी मेथड्स होती है जहां पे यू आर ट्राइंग टू राउट योर क्वेरी टू डिफरेंट रैक पाइपलाइंस ऑन द नेचर ऑफ लाइक फॉर अ वर्सेटाइल सिस्टम. सो एज दिस इंफॉर्मेशन सजेस्ट, तो हम लोग दो चीजें यूज करते हैं. एक मेटाडेटा राउटर होता है जिसमें हम लोग मेटाडेटा की इंफॉर्मेशन लेते हैं, एंड एक सिमेंटिक राउटर में हम लोग सिमेंटिक इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं. ओके. सो हम लोग क्वेरी को राउट करते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट रैक पाइपलाइन. सो in a say end-to-end RAG application, there might be different RAG pipelines. Okay, so we are just trying to route our query to a specific RAG pipeline as per its say semantic meaning, or as per its say what do you say field filtering. जैसे मैंने बोला ये क्रिकेट की क्वेरी है तो आई एम जस्ट पासिंग इट टू दैट पर्टिकुलर रैक पाइपलाइन. If it is related to politics, I'm just passing it to different pipeline and so on. Okay, so that is basically nothing but query routing. Then we can talk about query construction. Okay, so query construction होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, we will try to convert our queries into different programming languages. तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, we are not very much concerned about say a basic single language. हम लोग यहाँ पे different other programming या डेटा सोर्सेस को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं. जैसे सीक्वल एक हो गया, साइफर एक हो गया. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू यूज इज वी आर कन्वर्टिंग आवर क्वेरीज इनटू डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेजेस. तो मतलब ये एक बहुत सिंपल चीज है, क्वेरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग. मतलब मेरे को कोई सीक्वल में चीज कन्वर्ट करनी है, जैसे मेरे को क्वेरी सीक्वल में कंस्ट्रक्ट करनी है, या फिर मेरे को क्वेरी कोई डिफरेंट यू नो लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्ट करनी है इन ऑर्डर टू एक्सेस सम डिफरेंट डेटा सोर्सेज, दैट इज नोन एज क्वेरी कंस्ट्रक्शन. अभी हर जगह पे बेसिक linguistic query won't work, right? So I can just make use of some basic advanced mechanisms like text to SQL or text to cipher methods, which will like try to capture the information which is very much suitable for a particular query language. Okay, तो ये हो गया प्री रिट्रीवल स्टेज. तो प्री रिट्रीवल में हम लोगों ने क्या किया, अगेन हम लोगों ने अभी यूजर क्वेरी पे काम किया. यूजर क्वेरी में वी वर फेसिंग मल्टीपल इश्यूज. तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेरी एक्सपेंशन के सहारे एक बड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेरी को वी ट्राइड ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट चंक्स विद द हेल्प ऑफ मल्टी क्वेरी, विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी अप्रोचेस, चेन ऑफ वेरिफिकेशन अप्रोचेस. फिर हम लोगों ने क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करना चाहा कि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू prompt my LLM to give me a better version of that particular query. Then we looked at the approach known as hide. So hide में the entire concept is based on retrieving answer to answer similarity based on a say hypothetical document which it creates. Then we have step back prompting, जहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने जो भी क्वेरी पूछा है उसके एक स्टेप बैक जाके एक और ब्रॉडर लेवल का क्वेश्चन उसको पूछ रहे हैं. ओके, तो दैट इज वन मोर मेथड. देन देयर इज क्वेरी राउटिंग. तो जैसे मैंने बोला एक प्रोजेक्ट में यू आर डिफरेंट रैक पाइपलाइंस एंड बेसिकली आई एम ट्राइंग टू राउट द क्वेरीज टू डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइंस एज पर द एप्लीकेशन. ओके, तो इसमें आई कैन जस्ट मेक यूज ऑफ मेटा डेटा. जैसे मेटा डेटा में आपके पास मल्टीपल फील्ड्स होते हैं विच विल ट्राई टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट कंटेंट. तो यहाँ पे भी वो सेम चीज हम लोग यूज कर सकते हैं. वी कैन जस्ट इनकॉर्पोरेट ऑल द फील्ड नेम्स इन एन मेटा डेटा राउटिंग सिस्टम. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर क्रिकेट का क्वेरी है तो विल जस्ट लाइक व्हाट यू से पास दैट क्रिकेट का क्वेरी टू पर्टिकुलर पाइपलाइन. इफ द क्वेरी इज रिलेटेड टू से पॉलिटिक्स देन वी विल ट्राई टू पास इट ऑन टू सम डिफरेंट पाइपलाइंस एंड सो ऑन. ओके, देन अगर हम लोग को कोई दूसरे लैंग्वेज में मतलब इफ यू वांट टू convert the query, then perhaps we can make use of methods like text to cipher or text to SQL and so on. So ये हो गया आपका pre-retrieval stage. Okay, then we'll talk about the this is one of the image which is
हाइड का इमेज कि मतलब इट टेक्स द क्वेश्चन, इट creates a hypothetical document, it tries to map it in a embedding space, and then basically it will try to identify uh, the answer from this hypothetical embedding space. Okay. ओके, तो हम लोग अभी रिट्रीवल स्टेजेस के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे. ओके, तो इसमें ना बेसिकली मतलब चार चीजें हैं. लाइक फर्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिट्रीवल, कि मतलब रिट्रीवल बेसिकली क्यों यूज किया जाता है. तो इट्स अ पावरफुल टूल फॉर फाइंडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. तो ये सब मतलब दीज टू पॉइंट्स आर प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. देन द की कंसिडरेशंस आर बेसिकली इसका स्पीड जो होता है और क्वालिटी जो होती है. ये सबसे दो इंपॉर्टेंट की कंसिडरेशंस है व्हेन यू आर वर्किंग विद एनी सॉर्ट ऑफ अ रिट्रीवर. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ओके, विथ विच यू कैन परफॉर्म रिट्रीवर सिलेक्शन. ओके, सो रिट्रीवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर जब भी रिट्रीवर यूज करते हो रैग में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज बेसिकली हाउ इफिशिएंट इट इज, एंड बेसिकली द क्वेरीज आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड और नॉट. अगर वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो आपका रिट्रीवर कितना भी अच्छा हो तो भी वो फेल ही करेगा. तो फर्स्टली वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन इन द प्री रिट्रीवल स्टेज. नाउ मतलब वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बिफोर मेकिंग यूज ऑफ रिट्रीवर, एंड हम लोग को उसका रिट्रीवर का इफिशियंसी एज वेल एज स्पीड, वो सब चीजों हम लोग को टेक केयर करनी है. On the basis of that, we will be making use of choice of retriever. Okay, so retriever selections कैसे करेंगे? So there is no single best model. Again, it applies to any of the field like machine learning हो गया, deep learning हो गया, any of the say field you are working in. There is no best model as such. It totally depends on your need. आपकी स्पीड, आपको कौन से स्पीड पे चीजें वर्क करनी है, करानी है. कभी कभी कैसे होता है, आप स्पीड के बदले में एक्यूरेसी को ट्रेड ऑफ कर सकते हो. लाइक इफ यू वांट टू डेवलप अ एप्लीकेशन व्हिच इज वेरी फास्ट और व्हिच इज लाइक एक्टिंग, it has to act on a say very short period of time, it has to provide the response, then perhaps you can work on some strategies which, I mean, for which you can I mean you are in a state to some sort of give back the accuracy. थोड़ा accuracy कम आएगा तो भी चलेगा, but I want a like faster output. Sometimes it's like that कि आप धीरे करो, आराम से करो, चलेगा, no issues. I have that cost constraint managed by me, but I want the most accurate results. So अगर आप कोई बहुत सेंसिटिव जगह पे काम कर रहे हो, सेंसिटिव एरियाज पे काम कर रहे हो, that time you will require accuracy to be very much higher than that of speed. तो मतलब उस केस में थिंग्स विल चेंज. तो रिट्रीवर सिलेक्शन इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. आप अलग अलग रिट्रीवर्स के साथ ट्राई कर सकते हो. विच आर द टाइप ऑफ रिट्रीवर्स? देयर आर स्पार्स रिट्रीवर्स, देयर आर डेंस रिट्रीवर्स, एंड यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ द हाइब्रिड अप्रोचेस एज वेल. तो ये स्पार्स रिट्रीवर्स हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था पिछले सेशन में. We have talked about different retriever, I mean, methods in order to represent the document and finding out the सिमिलैरिटी स्कोर. तो एक बैग ऑफ वर्ड्स हो सकता है, TF-IDF हो सकता है, BM25 हो सकता है, एंड सो. तो ये बेसिकली क्या करता है, आपका फ्रीक्वेंसी चेक करता है, आपका एक वर्ड या एक सेंटेंस आपके डॉक्यूमेंट में कितनी बार रिपीट हुआ है. इट विल ट्राई टू कैलकुलेट द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, टर्म फ्रीक्वेंसी. इट हैज ऑल द फॉर्मूलाज व्हिच आर यूजुअली वर्कड ऑन अ स्पार्स काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपका जो वेक्टर होगा रिप्रेजेंटेशन किया हुआ, उसमें से कुछ चीजें नॉन जीरो होंगी, बहुत सारी चीजें जीरो होंगी. ये मैंने बताया था लास्ट टाइम स्पार्स रिट्रीवर के बारे में. डेंस रिट्रीवर is basically more powerful, but dense retriever के केस में what you try to use is you will try to use some sort of neural networks. Colbert हो गया या BG retriever हो गया and so on. तो ये retrievers आपके क्या करेंगे? They will try to like work on the dense kind of a representation. The difference between sparse and dense representation is very much clear. तो sparse में आप लोग के पास ऐसा वेक्टर होता है जिसमें कुछ एंट्रीज नॉन जीरो होती है, बाकी की सारी जीरो होती है. ओके, डेंस में हर चीज आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन जीरो ही होगी. ओके, एंड इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सिमेंटिक मीनिंग जो आप डेंस रिट्रीवर में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो. स्पार्स में आप वो मीनिंग कैप्चर नहीं करते हो. जैसे आप BM25 या TF-IDF या बैग ऑफ वर्ड्स यूज करोगे तो उससे आपका सिमेंटिक मीनिंग कभी कैप्चर नहीं होगा. वो फ्रीक्वेंशियल मीनिंग आपका कैप्चर होगा जो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मैटर करता है. डेंस रिट्रीवर में फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, सिमेंटिक मीनिंग इज द इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट. सो अगेन जैसे मैंने बोला था, देयर इज नथिंग गुड और बैड. although dense retrievers are more powerful, but it's not the case कि हर जगह पे आपको dense retriever यूज करना है. कई जगह पे
I mean, you can just make use of sparse retriever and get your things done. It might be a very simple problem, and they might give you, say, faster results. Dense retrievers are little complex architecture, so I mean, they might involve some sort of costing, some sort of complexity, and so on. Yeah, but they are sort of more powerful in nature. But again, uh, if it is very powerful, it has to be little complex because that's how things work, right? Especially when you are working with neural networks. Okay, and then आप ऐसा भी अप्रोच यूज कर सकते हो जिसमें यू आर मेकिंग यूज ऑफ मिक्स अप्रोच और हाइब्रिड अप्रोच, जिसमें आप स्पार्स रिट्रीवर का भी यूज कर रहे हो, डेंस रिट्रीवर का भी यूज कर रहे हो. ओके, सो आपका जो रिट्रीवर स्टेज है उसमें बेसिकली यू आर सपोज टू मेक श्योर यू आर coming up with a good choice of a retriever. So that might be done through a sparse retriever method, or that can be done through a dense retriever method, or that can be done with the mix or hybrid, what you say, method. Okay. अभी next step is you have to fine tune the retriever. Okay. तो retriever आपने एक choose कर दिया, तो basically you have to fine tune your retriever. There are multiple methods or techniques with which you can fine tune your retriever. Okay. So basically, I mean, there is supervised fine tuning, then you have reinforcement learning, you have adapters, you have LSR methods, which is your basically, I think it's known as L supervised फाइन ट्यूनिंग, आई एम नॉट श्योर. बट यहाँ पे हम लोग LLMs के थ्रू मतलब फाइन ट्यूनिंग करते हैं एंड सो ऑन. द मेन मेथड इज ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइन ट्यून आवर रिट्रीवर इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर. तो ये हमारा मेन एम है. तो रिट्रीवर मेथड में यही चीजें होती है. देखो हम लोगों ने कहाँ से यार कैसे स्टार्ट किया था, हम लोगों ने नाइव रैक से स्टार्ट किया था जहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल चीजें यूज कर रहे थे. हम लोग बस क्वेरी दे रहे थे, एक रिट्रीवर यूज कर रहे थे, एंड वो क्वेरी को हम लोग देख भी नहीं रहे थे कि क्वेरी कैसे दिया है, वो सही से दिया है गलत दिया है. हम लोग क्वेरी दे रहे थे, उसको वेक्टर स्टोर में सेव कर रहे थे, उससे रिट्रीवर से टॉप डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे. हम लोग देख के भी नहीं रहे थे कि टॉप डॉक्यूमेंट सेंस बना रहे हैं, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे. उससे हम लोग LLM को प्रॉम्प्ट कर रहे थे. हम लोग ये भी नहीं चेक कर रहे थे कि प्रॉम्प्टिंग सही से हो रहा है. ओके, एंड देन हम लोग LLM से रिस्पॉन्स ले रहे थे. बट तो हम लोग को दिक्कतें समझ में आना शुरू हो गई कि ओके, क्वेरी स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम है, रिट्रीवल स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम है, देन प्रॉम्प्टिंग स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम है. तो उसको हम लोगों ने एड्रेस करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ एडवांस रैग मेथड्स. ओके, नाउ वी अंडरस्टूड कि ओके देयर कैन बी सम मोर say deeper things which you can talk about in depth in order to work on your query, in order to work on your prompt, in order to work on your retriever, and so on. Okay, LLM तो आपका पहले से ट्रेन हो चुका है. यू आर जस्ट ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट द एक्सटर्नल नॉलेज बेस. तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, जो क्वेरी आपने पूछा है उसको आप अच्छे से लिख सकते हो, मतलब उसको एक अच्छे तरीके से LLM को मतलब फीड कर सकते हो. यू कैन मेक यूज ऑफ बेटर क्वालिटी रिट्रीवर फॉर योर particular task. You can work on fine tuning of that retriever. Okay, and then you can work on prompt compression, you can work on some sort of re-ranking. तो यही methods के around हमारा जो application है that will move around. Okay, so basically then यहाँ पे मॉड्यूलर रैग में क्या होता है, जैसे हम लोग ने एडवांस रैग में पोस्ट रिट्रीवल स्टेज देखा था, तो मॉड्यूलर रैग में हम लोग बेसिकली वही स्टेज को थोड़ा एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ रॉ रिट्रीवल. तो रॉ रिट्रीवल में देयर माइट बी इश्यूज कि आपका जो LLM है इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज आपका टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट माइट बी लेंथी इन नेचर. आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारा नॉइस है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन. कंटेक्स्ट विंडो इज लिमिटेड. सो बेसिकली आपने जो कॉन्टेक्स्ट दिया है कि आपको इतना कॉन्टेक्स्ट याद रखना है, जो उसका विंडो है, आई मीन दैट इज लेंथ ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विंडो, so that might be limited, so it is not able to understand the entire context since that window size is limited. Okay, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एडवांस रैंक में हम लोगों ने देखा था री रैंकिंग टेक्निक्स यूज करेंगे. ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने रॉ रिट्रीवल में भरोसा नहीं रखेंगे. हम लोगों ने टॉप 25 डॉक्यूमेंट्स उठा लिए, उसमें से टॉप 25-30 जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हम लोग उसको री रैंक करेंगे. तो हम लोग इससे क्या फायदा होगा, अगर हम लोग जब री रैंकिंग करेंगे तो जो भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा या फिर जो नॉइसी इन्फॉर्मेशन होगा दैट विल ऑटोमेटिकली गेट फिल्टर आउट, और हम लोग सिर्फ टॉप डॉक्यूमेंट्स लेंगे जो मतलब सेंस बनाते हैं. ओके, तो बेसिकली री रैंकर टेक्निक्स के लिए हम लोग रूल बेस्ड री रैंकिंग यूज करते हैं. तो रूल बेस्ड री रैंकिंग में हम लोग क्या करेंगे, रिलेवेंस चेक करेंगे, डाइवर्सिटी चेक करेंगे, मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस चेक करेंगे. तो अगेन दीज आर
की मेथड्स, तो ये सॉर्ट ऑफ एक इंडेक्सेस या केपीआईज है। तो जैसे मैंने बोला था सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी हो गया। सो व्हाट डज कोसाइन सिमिलैरिटी डू? इट विल ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलैरिटी बिटवीन क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लोग री रैंकिंग में क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेरी ले रहे हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस उन दोनों के बीच में रिलेवेंस ले रहे हैं, रिलेवेंस स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। देन देयर इज वन मोर केपीआई विच इज नोन एज मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस। एंड हम लोग वो जो वैल्यू आएगा हर केपीआई का, उसके बेसिस पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं। टॉप 25 में से अगर वो टॉप 3 लेना है इन दैट एग्जांपल, तो ये हम लोग मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, देन वी आर बेसिकली सॉर्टिंग द डॉक्यूमेंट्स। ओके। इसके अलावा हम लोग मॉडल बेस्ड री रैंकिंग कर सकते हैं। तो मॉडल बेस्ड री रैंकिंग में यू हैव बर्ट एंड कोहर री रैंक। सो आई टोल्ड यू अबाउट एक कोहर। सो कोहर हैज एन एडवांस री रैंकर। अगेन उन्होंने लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन करके रखे हैं अपने, विच आर ट्रेन्ड ओवर लाइक मोर देन 100 लैंग्वेजेस। ओके। तो आप कोहर री रैंक का यूज कर सकते हो। दे हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड द लैंग्वेज मॉडल, यू डोंट हैव टू like call that language model. You can just use the re-ranker API, and basically, you can just re-rank your document with the help of core re-ranker. You can use other models as well. Okay. So then there are like few methods which are usually, done for working on the prompts. So compression and selection techniques are few of the methods. So then like first is your basically compression. तो compression में आप क्या करते हो? तो आप छोटे मॉडल्स के साथ स्टार्ट करते हो, और छोटे मॉडल्स के साथ आप प्रॉम्प्ट में से जो भी इररिलेवेंट कंपोनेंट है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इज बेसिकली एन इंस्ट्रक्शन। तो मैंने बोला है कि यू आर एन एआई असिस्टेंट और यू आर क्यू एन ए आंसर असिस्टेंट हु इज सपोज टू गिव मी आंसर फॉर द यूजर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। ऐसा मैंने प्रॉम्प्ट लिख के दिया। अभी कैसे हो सकता है, हर टाइम ये प्रॉम्प्ट इतना प्रिसाइज होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो हम लोग को प्रॉम्प्ट कंप्रेशन पे काम करना पड़ेगा, वो प्रॉम्प्ट को क्लीन करना पड़ेगा, वो प्रॉम्प्ट को फाइंड मतलब लाइक वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ बेटर फैशन, राइट। तो उसके लिए वी कैन मेक यूज ऑफ मेथड ऑफ कंप्रेशन। सो कंप्रेशन में क्या होता है, इट विल मेक यूज ऑफ स्मॉलर मॉडल्स, जो क्या करेंगे, वो जो प्रॉम्प्ट है उसमें से जो मतलब रिडंडेंट चीजें या नॉइसी चीजें या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है उसको रिमूव कर देगा। ओके। सो आपका जो प्रॉम्प्ट है जो आपने अच्छे से नहीं लिखा था, दैट विल be kind of written in a proper fashion. Okay. Then basically there is one more what do you say component which is known as recomp. So उसमें there are two types of what do you say compressor. एक extractive compressor होता है, एक abstractive compressor होता है. Okay. So extractive compressor क्या होता है, वो relevant sentences को extract करता है। Abstractive मतलब compressor जो होता है, what it does is it basically tries to create summaries from multiple documents. ओके। तो ये सब चीजें हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग ये चीजें इसलिए करते हैं कि हम लोग को प्रॉम्प्ट को और अच्छे से रिप्रेजेंट करना। ओके। तो फॉर दैट वी कैन मेक यूज ऑफ मेथड विच इज नोन एज कंप्रेशन। इन कंप्रेशन वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। वी कैन मेक यूज ऑफ स्मॉल एलएलएम कंप्रेशन, वी कैन मेक यूज ऑफ recomp compression, where we have two components in that particular method, which is one is extractive, other is abstractive. ओके। तो एक्सट्रैक्टिव में आप प्रॉम्प्ट में से रिलेवेंट सेंटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करोगे, एब्स्ट्रैक्टिव में आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू जनरेट समरीज फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड सो। ओके। then we have other techniques which is known as tagging filter. So and then there is one more component which is known as LLM critique. So tagging filter में होता क्या है, it will try to assign labels to documents and filters based on the user's query. अभी अगर आपको याद है, ये ऐसी सिमिलर चीजें जो हम लोगों ने मेटा डेटा फिल्टरिंग में या मेटा डेटा राउटिंग में देखी थी। मेटा डेटा राउटिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, यूजर क्वेरी के साथ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पास कर रहे थे, जो फील्ड्स वो क्वेरी को अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को लेबल्स के साथ असाइन कर रहे हैं। ओके। एंड फिल्टर्स के साथ उसको मतलब एसोसिएट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लाइक अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूजर्स क्वेरी। देन वी आर टॉकिंग अबाउट एलएलएम क्रिटिक मॉड्यूल। तो बेसिकली इसमें क्या करता है, ये जो है ना, इट्स इट्स काइंड ऑफ वर्क एज अ सेल्फ क्रिटिक। तो वो खुद जो भी आंसर फाइंड आउट करता है, इट विल ट्राई टू इवेल्युएट इट्स ओन आंसरिंग सिस्टम। ओके। जैसे मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई आंसर्स फाइंड आउट किए, तो in order to double check, what I will do is I will just relook at those answers and then I will try to see again कि इसमें से कुछ irrelevant चीज है क्या, उसको मैं हटा दूंगा। तो ये चीज एलएलएम खुद ही कर रहा है। ओके। तो एलएलएम क्रिटिक मॉड्यूल के हिसाब से वो क्या करता है कि इट विल ट्राई टू
evaluate the retrieve content and filters out the irrelevant documents. ओके, तो ये सब चीज है, ये बेसिकली मॉड्यूलर रैक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन दिस इज द फाइनल मोस्ट पार्ट. ओके, तो ये जो फाइनल मोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू डील विथ जनरेशन स्टेप. ओके, तो अभी आप लोगों ने प्रॉम्प्ट पे काम कर लिया, रिट्रीवल पे काम कर लिया, फिर मतलब जो यूजर क्वेरी था उस पे काम कर लिया, एंड सो ऑन, राइट. बट अभी हम लोग सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है, जहाँ पे हम लोग जनरेटर की बात कर रहे हैं, जनरेशन की, जो मतलब एलएलएम को आप बोलोगे कि इसमें से मेरे को प्रॉपर आंसर तैयार करके दो, दैट इज बेसिकली जनरेशन स्टेप, राइट. तो उस स्टेप में कौन सी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है, तो आप जनरेटर कौन सा सिलेक्ट करना है, ओके, दैट इज वन ऑफ द की कंसिडरेशन. सो यू कैन मेक यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड एपीआई बेस्ड जनरेटर. दिस इज अ वेरी कॉमन इन्फॉर्मेशन. आप ओपन एआई का चैट जीपीटी जैसे यूज कर सकते हो. ओके, तो there are benefits, there are drawbacks. I'm not going to list this, API generators. These are very, very common things. I'm just making a document out of it. That's why I'm just mentioning it over there. Then you have on-premise generators. आप इसको locally deploy कर सकते हो, आप custom LLMs बना सकते हो. जैसे आप basically, if you don't want to use say any LLM like OpenAI LLM, you can just use its alternate variant, which is known as local GPT, जो आपका एक ऑफलाइन जीपीटी मॉडल है, जो जिसमें आप कोई एपीआई को कॉल नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली मॉडल जैसे स्टोर कर रहे हो. उस मॉडल को स्टोर करके बेसिकली यू आर जस्ट कॉलिंग दैट मॉडल. That is a local GPT model. It's an interesting model. You can just look for all sort of local models. या फिर आप मतलब कस्टम एलएलएम्स भी बना सकते हो. इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप में आपके हाथ में बेटर प्राइवेसी होगा, मोर कंट्रोल होगा. देयर आर मेनी लोकल मॉडल्स, so you can just have a look at them. These models don't take your data into some third party service. They You will have the entire control on your own model. तो आप अगर कोई मतलब सेंसिटिव चीज के लिए यूज करना चाहते हो, यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ लोकल LLMs like you have GPT for all. uh, that is one of the model. You can just make use of the different other models as well. Okay. So these are on-premise generators. Then we have talked about the generator selection, which is cloud API-based generator, which is very common. OpenAI हो गया. You can talk about Power AI, and there are multiple other generators. Okay, आप जनरेटर की फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो. तो इसमें बेसिकली यू हैव सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग इज देयर. तो जैसे मेरा मतलब ओपन एआई का जो एलएलएम, आई कैन जस्ट स्पेसिफिक टास्क के लिए मैं अगर कस्टम एलएलएम बना रहा हूँ, या फिर कोई भी अगर एलएलएम मैं आई एम यूजिंग, आई कैन जस्ट फाइन ट्यून इट फॉर अ डोमेन स्पेसिफिक टास्क. सो यहाँ पे आई मीन we are trying to cover each and every aspect which is related from a user query till the end creation, output creation wala process. Okay, so generator fine tuning is the last step where you are trying to make use of different training methods or say tuning methods. Supervised fine tuning हो गया, reinforcement learning हो गया, distillation हो गया, या फिर dual fine tuning हो गया. There are different methods with which you can fine tune your generator. ओके, तो मतलब आपने कोई भी एलएलएम आप यूज कर रहे हो, उसको फाइन ट्यून कर रहे हो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट जनरेशन स्टेप. सिंस जनरेशन तो एलएलएम को ही करना है, तो देयर यू कैन जस्ट वर्क ऑन फाइन ट्यूनिंग. ओके, सो दैट वाज बेसिकली, आई मीन दिस ऑल कवर्स दी व्हाट यू से एंटायर मॉड्यूलर रैक. तो ये बेसिकली मुझे एक इंटरेस्टिंग डायग्राम मिला था. अगेन दिस इज नॉट व्हाट यू से क्रिएटेड बाय मी. ये बेसिकली लैंगचेन के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आपको ये मिल जाएगा, उनके नोटबुक्स पेज में. तो यहाँ पे दे हैव ट्राइड एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स, मतलब टेक्स्ट टू सिक्वल, टेक्स्ट टू साइफर हो गया, सेल्फ क्वेरी रिट्रीवर हो गया, फिर क्वेरी ट्रांसलेशन में मल्टी क्वेरी कैसे काम करता है, रैक फ्यूजन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया. देयर आर मल्टीपल मेथड्स विद व्हिच यू कैन जस्ट ट्रांसलेट द क्वेरी. यू कैन राउट द क्वेरी विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल और सिमेंटिक राउटिंग. यू कैन जस्ट इंडेक्स योर क्वेरी. ये जो स्टेप्स है, दीज आर बेसिकली इंडेक्सिंग, जो हम लोगों ने बात की थी, चंक ऑप्टिमाइजेशन, मल्टी रिप्रेजेंटेशन, स्पेशलाइज एम्बेडिंग्स. ये जो आपका जनरेशन स्टेप है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि जनरेशन के लिए कौन से कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो लोकल एलएम्स हो गए, ओपन सोर्स हो गए, ओपन एआई जैसे हो गए, उसको हम लोग फाइन ट्यून कर सकते हैं, एंड सो ऑन. And basically, it is all about talking about the what do you say, post retrieval method. जैसे re-rank हो गया, rank GPT हो गया. There are different methods which will try to re-rank your documents and retrieve the prioritize re-rank content out of the particular what do you say results. Okay. हाँ, ये मैंने जस्ट आई थॉट इट, लाइक मैंने रिकम्पोजिशन और रैक फ्यूजन के बारे में लिखा नहीं था.
वो PPTs में. So that's why I thought of taking out these images from that particular source only. So you'll be able to find all this content on the LangChain documentation page. ये मैंने नहीं बनाया. This is all their content. But I will just share the PPT along with you as well. तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, हम लोग एक क्वेश्चन होता है, हम लोग उसको मल्टीपल क्वेश्चंस में वी आर बेसिकली स्प्लिटिंग इट एज यू कैन सी Q1, Q2, Q3. For all the questions we are basically passing it into the different vector stores. So basically हम लोगों ने हर किसी के लिए यूजर क्वेरी के लिए हर Q1, Q2, Q3 हर यूजर क्वेरी के लिए we have created the separate embedding, and basically we are making answers for each query. तो document one का जो आंसर है that will be forwarded to the next step. उससे एक आंसर निकलेगा that will be forwarded to next step and so on. Then सबके आंसर्स कलेक्ट होने के बाद आपका मेजर क्वेश्चन वाज नॉट क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, राइट. आपका मेजर क्वेश्चन तो क्वेश्चन मतलब ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, दिस इज योर मेजर कंसर्न. यू आर नॉट वरीड अबाउट क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री. आपको आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या कर रहा है, Q1, Q2, Q3 में स्प्लिट कर रहा है. Q1 का आंसर आगे पास ऑन हो रहा है, Q2 का इन्फॉर्मेशन आगे पास हो रहा है, Q3 का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा. उन तीनों का जो भी फाइनल आंसर होगा उसको मतलब LLM के थ्रू जनरेट किया जाएगा, and that will be produced in front of you as the answer to the original question. That is what it is, decomposition. Okay. रैक फ्यूजन में क्या होता है, रैक फ्यूजन में बेसिकली यू आर मेकिंग यूज ऑफ अगेन स्प्लिटिंग लाइक Q1, Q2, Q3. आपने आंसर्स बना दिए, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं कर रहे, यू आर बेसिकली पासिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म और री रैंकिंग मैकेनिज्म, एंड देन बेसिकली यू आर एबल टू गेट द फाइनल आंसर. ओके. सो दैट्स हाउ डिकम्पोजिशन एंड रैक फ्यूजन वर्क्स. ये मेटाडेटा फिल्टरिंग है. तो जैसे मैंने आपको बोला था, मेटाडेटा फिल्टरिंग में देयर आर मल्टीपल थिंग्स. आप जो मेटाडेटा आपका कैसा दिखता है, मेटाडेटा में आपका सिर्फ कंटेंट नहीं होता, आपके कंटेंट के साथ और भी अलग अलग चीजें होती है. जैसे आपका मतलब पब्लिश डेट हो गया और कुछ चीजें आपको फील्ड से यूज करने हैं, तो दीज ऑल थिंग्स विल बी देयर, और दिस इज कॉल्ड एज मेटाडेटा. तो अगर आपको मतलब यूजर फिल्टरिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेटाडेटा, तो यूजर क्वेरी को फिल्टर करना है, तो फॉर दैट रीजन यू कैन मेक यूज ऑफ metadata filter. Then this is basically semantic routing, and this is query routing. In semantic routing, what we are doing is we have like different prompts, and we are basically, you know, making use of what do you say, prompt inside LLM. हम लोग उस prompt को choose कर रहे हैं, then basically, I mean, this out of these two prompts, we are making use of a more fine-tuned prompt, and then we are producing the answer. Query routing में basically we have different databases or different what do you say, uh, retriever databases यहाँ पे आप बोल सकते हो. जैसे graph database हो गया, normal vector store हो गया. Graph database is something where you have all sort of relations expressed in terms of say uh, ग्राफिकल स्ट्रक्चर में आपके पास मतलब नोड होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं एंड सो ऑन, राइट. वेक्टर स्टोर इज अ प्लेन इंडेक्स स्ट्रक्चर जहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट होगा, उसका इंडेक्स होगा, एम्बेडिंग होगा एंड सो ऑन. तो क्वेरी इधर से राउट कर सकते हो आप. अगेन ये सिमिलर मेथड्स है. मतलब LLM को हम लोग चूज करने देते हैं कि कौन सा बेसिकली डेटाबेस उसको चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू से क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल अबाउट द राउटिंग. हाँ, नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट. सो बेसिकली हम लोगों ने रैक्स के बारे में तो देख लिया. नाउ आई वांटेड टू टॉक समथिंग अबाउट हाउ टू इवैल्यूएट रैक. ओके. सो जस्ट हैव अ लुक एट द चैट. ओके, हाउ टू क्रिएट सच विजुअल्स. यस यस प्रज्वल, आई विल बी शेयरिंग ऑल द PPTs. ये मतलब पब्लिक यूज के लिए है. द पर्पस ऑफ दिस इज टू रिट्रीव. ओके, कैन इंक्लूड सम. ओके. Not sure whether I'll be able to answer this since I have to talk about RAG evaluation and the notebook as well. Okay, you can do one thing, guys. You can just post your questions in the comment forum. I will try to answer them. Since I have to talk about RAG evaluation as well as the notebook, so and we are just left with I think 25 more minutes. Right? So let's just tap it out. If we get the time, we'll try to address this question. Okay. If not, then you can just post it in the comment forum of the course, and I will try to answer it from there. Okay. सो लेट्स टॉक अबाउट रैग इवैल्यूएशन. रैग इवैल्यूएशन में बेसिकली अभी हम लोगों ने जो भी मतलब प्रोसेस किया,
उसका एंड आउटपुट को इवेल्युएट कैसे करना है, दैट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट, ओके, बिहाइंड रैग इवेल्युएशन। अभी अगर आप मशीन लर्निंग की बात करोगे या दूसरे किसी चीज की बात करोगे, no one is replying there. Don't worry, I will reply. Don't worry. I'm not avoiding the questions. The point is I want to cover the actual content. Then perhaps we can jump onto the questions since there are more things pending and we have to cover it in 25 minutes. So let's do that. Don't worry, I will answer your questions. So RAG evaluation में what we are doing is it's not like just a classical machine learning जहाँ पे आपने आपके पास कोई क्लास का रिस्पॉन्स हो गया, फिर आपने मतलब you have a probability for corresponding to class say particular classes and then you are just making use of some sort of accuracy metric in order to see what is its accuracy and so on. Regression setup हो गया तो you are just computing RMSE and so on. But इसमें हम लोग आउटपुट को इवेल्युएट कैसे करेंगे? ओके, सो आई मीन पॉइंट इज यहाँ पे आपको पूरे का पूरा टेक्स्ट मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग अ सिंपल नंबर। रिग्रेशन सेटअप में आपको एक नंबर मिल रहा था, आपने उसके साथ एरर निकाल दिया और यू जस्ट प्रेजेंटेड दैट एरर। क्लासिफिकेशन सेटअप में आपने अलग 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 मेट्रिक्स दिखा दिया, प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, यू हैव शोड मल्टीपल मेट्रिक्स, राइट? बट यहाँ पे तो आपके पास एक पूरा का पूरा आंसर आ रहा है, आप उसको कैसे जज करोगे, इसको इवेल्युएट कैसे करोगे आपके प्रोसेस को? देयर आर डिफरेंट मेथड्स with which you can just just evaluate your rack system. One is your faithfulness. We'll just quickly cover it. So basically, आपका जो rack system होता है, rack pipeline होता है, that can be evaluated with some sort of indicators. Faithfulness is one of the indicator. So faithfulness में क्या होता है? Basically, it will try to understand how good or say how well your answer is aligning with the factual information in the retrieved context. Okay. So basically, it's not the what is accurate measure of truthfulness, but still, if you're talking about, say for example, यहाँ पे मैंने ऐसे query लिखा है कि what is the capital of France, okay, and मेरे को कुछ context देना पड़ेगा. This context you can just जो मैंने top 3 documents rack से extract किए थे, just identify these as top 2 documents, okay. First document talks about France is a country located in the Western Europe. Second is the Paris is the most populous city in the France. ओके, तो ये मेरे बेसिकली टॉप 2 डॉक्यूमेंट्स है जिसको मैं कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, जो मैंने री रैंकर वगैरह सब यूज करके एक्सट्रैक्ट कर दिए थे। ओके, एंड आई हैव आस्क्ड वन क्वेरी। नाउ मेरा जो एलएलएम है, अगर इफ इट इज रिप्लाइंग इट एज अ पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, देन बेसिकली इट इज गिविंग मी a faithful answer. Okay, so I will be able to like have some faith on my LLM since it is able to give me some sort of a accurate or some sort of precise answer. Okay, although it's not the entire measure of truthfulness, there are different metrics for that as well, but still here I am able to get the correct or say highly faithful responses. Okay, again this score will range from 0 to 1. Higher the score, better are the results. And if you are say LLM is giving an answer like the capital of France is Eiffel Tower, now the point is this is not picking it up from the context, and it is an incorrect claim. Okay, so or say invalid claim or say noisy claim. So basically that is a low faithful response. It will have a what to say a value which is very close to 0. So basically this is number of generated claims in the present in the context divided by total number of claims made in the generated response. That is how you will calculate the faithfulness. Okay. आंसर रिलेवेंस क्या होता है? आंसर रिलेवेंस ये चेक करता है कि आपका जो भी आंसर वो रैक सिस्टम से आपको मिला, इज दिस रिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल क्वेश्चन और नॉट। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू आर एबल टू सी कि इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। ओके, जो भी मैंने री रैंकर वगैरह सब यूज करके आई गॉट अ कॉन्टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ टॉप डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे उसने लिखा था अमेरिकन सिविल वॉर वाज अ सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स and it was fought between Union and Confederacy, the later formed by states that seceded. Okay, तो basically इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एलएलएम क्या करता है, एक क्वेरी बनाता है, जो भी आंसर उसने दिया है ना उसके बेसिस पे क्वेरी बनाता है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड आंसर रिलेवेंस को कैसे चेक करेंगे। एलएलएम मेरे को एक आंसर जनरेट करके देगा, एलएलएम क्या करेगा, वो जो आंसर है ना उसके करस्पॉन्डिंग एक क्वेरी बनाएगा कि बेसिकली क्वेरी मतलब इस क्वेश्चन इस आंसर के लिए क्या क्वेरी हो सकता है, एंड वो क्या करेगा, वो क्वेरी और जो मेरा यूजर ने सबसे पहले जो क्वेरी पूछा था इन दोनों के बीच का
कोसाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा. Okay, so it will try to understand some sort of similarity between the created query versus actual, sorry, it will try to calculate some sort of similarity between सबसे पहले जो क्वेरी पूछा था और एलएलएम ने जो भी आंसर दिया था उसके ऊपर मैंने मतलब एलएलएम ने क्वेरी बनाया एंड देन इट विल ट्राई टू लाइक फाइंड आउट हाउ एक्यूरेट इज दैट क्वेरी. वो एक क्वेरी नहीं बनाएगा, मल्टीपल क्वेरीज बनाएगा. इट विल ट्राई टू कैलकुलेट द एवरेज कोसाइन डिस्टेंस. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे एलएलएम ने अगर फॉर एग्जांपल ये आंसर दे दिया, द अमेरिकन सिविल वॉर वाज फाउट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स विद स्लेवरी बीइंग द मेजर कॉज. ओके, तो व्हाट इट विल ट्राई टू डू इज इट विल क्रिएट अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर. एक नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस क्रिएट करेगा. व्हाट इट विल डू इज वो हर क्वेश्चन का इनिशियल क्वेरी के साथ सिमिलैरिटी चेक करेगा एंड जो भी उसने मतलब 10 अगर क्वेश्चंस क्रिएट किए होंगे तो हर क्वेश्चन का यूजर के क्वेरी के साथ सिमिलैरिटी चेक करेगा. 10 जो चीज है उनका एवरेज लेगा और वो मेरा बेसिकली आंसर रिलेवेंस है. ओके, सो फॉर एग्जांपल आंसर रिलेवेंस अगर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे अगेन 0 to 1 का मतलब इसका there is what is a ranking. Higher the value of what is answer relevance, better is the output. So यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो अमेरिकन सिविल वॉर वाज फाउट बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स विद स्लेवरी बीइंग अ मेजर क्लॉज. दिस is actually now the point is this might not come from the actual context which it has really which it has received, right? But the point is it is still talking things about the American Civil War. Now this response is not the response which we want, okay, but it is still somehow similar or say somehow relevant, not similar, somehow relevant to what we wanted out of our query. Okay, so हम लोग की query में हम लोगों ने क्या पूछे थे? Causes पूछे थे. Okay, now it is some sort of relevant because it is addressing causes. It is talking about slavery. Okay, so it is at least addressing some sort of a cause. Okay, तो यहाँ पे this is a highly what you say relevant answer. Okay, while a low answer relevance could be seen from a perspective कि American Civil War was deadliest conflict in the American history. यहाँ पे are we talking about the causes? We are not talking about the causes. We are making some different statement. So this is an answer with low relevance. Okay, so let's just talk about the next part. Okay, so there are few more matrices like we have context relevance. So in the context relevance, we basically have like we will basically try to calculate what you say relevance number of relevant sentences from the context, and we basically divide it with respect to total number of sentence in the retrieved context. So यहाँ पे again we have given this example जहाँ पे we are asking about what are symptoms of common cold. We are providing two contexts. First is high relevance context, other is low relevant context. So first is basically the common cold is a viral infection. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा highlight is about symptoms. It is talking about some sort of say running nose, congestion, sore throat, cough. These are basically some sort of symptoms. It has a very high relevance. Okay, तो ये क्या कर रहा है, आपने जो कॉन्टेक्स्ट दिया था इट इज आई मीन जो हाई रिलेवेंस वाला रिस्पॉन्स होगा, कॉन्टेक्स्ट हाईली कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंस वाला रिस्पॉन्स, it will try to extract the relevant sentence from the context, and if it is basically able to pick out the highly relevant sentence from the given context, then आपका वो रिस्पॉन्स होगा, उसको आप हाईली कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंस रिस्पॉन्स मानोगे. अगर आपका लो रिलेवेंस वाला रिस्पॉन्स कैसे दिखेगा, इसमें हम लोग बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लू. नाउ हियर we are talking about common cold and its symptoms. This has given us the relatively correct answer, but here it is talking about flu, so it's not the correct answer. It is having low relevance. So from what do you say, retrieved context, whether it was it able to give the what do you say relevant sentences from the context? No, it was I mean, it tried to give some answers related to flu, but our question was related to symptoms related to common cold. Okay, so this is the first case which has high relevance. This is the second case which has low relevance. Okay, so we have another method in which we try to what do you say answer the context recall. So context recall में क्या होता है, it will try to understand some of the ground truths. Okay, कि आपके जो आपने जो context retrieve किया है उसमें ground truths कितने हैं, and how many number of sentences are there in the ground truths. Okay, अभी ये सब चीजें मैं ऐसे theoretically explain करने जाऊंगा, it won't make sense, so that's why I have written these examples.
We can just refer to these examples and you will be able to understand these concepts in a proper fashion. Okay. So अगर मेरा query था कि who won the first cricket World Cup? Ground truth. The ground truth is basically the fact. Okay. So answer is England won the cricket World Cup in 1975. Okay. तो अपना जो first context है, which has a very high context recall value, उसमें क्या आएगा आपका? The cricket World Cup was first held in England in 1975. Okay. The next, what you say, context, which is talking about the Cricket World Cup, is an international championship for cricket teams. Okay. Now, if you just, you know, try to understand, आपका जो दोनों भी context है, they are not giving you the actual answer to your query. आपका question क्या था? Who won the first cricket World Cup? Did you care about कौन से location पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था? You were more like worried about who won the first cricket World Cup. Okay, what is its ground truth? Ground truth is, what is ground truth? It's basically the actual fact. It is England, which England, the country which won the first cricket World Cup in 1975. इसमें कौन से ground truth है? It basically talks about England. It basically talks about the year which it has hosted, 1975. Since we are talking about the first cricket World Cup, it was hosted in 1975, which is the first cricket World Cup year. Now, हमने जो first context है, how many ground truth sentences it was able to answer. Okay, so it is basically giving you the Cricket World Cup was first held in England in 1975. Okay, so now this is not giving you the exact, perfect context, but the point is it is talking about the ground hosting year. So आप अगर इस आंसर के साथ इसको compare करोगे, at least it is able to talk something about the what do you say, when it was held. Okay, although it's not the correct answer. Okay. So if you are talking about the context two, then context two is entirely having a very low recall, which is talking about the Cricket World Cup is an international championship for cricket teams. Does it have anything to be, related to first Cricket World Cup or its hosting place or its hosting year? So basically, this is some sort of what do you say, example where you are getting a very low context recall. Okay. Let's talk about two more metrics. So one is answer semantic similarity. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो भी आंसर होगा उसको आई मीन वी विल ट्राई टू चेक द सिमेंटिक मीनिंग. अगेन दिस इज नॉट अ फैक्चुअल एक्यूरेसी. हम लोग यहाँ पे ट्रूथ की बात नहीं कर रहे. तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे क्वेरी लिखा है कि व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. ओके, ग्राउंड ट्रूथ आपका जो एक्चुअल फैक्ट है दैट इज माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन. ओके, सो आपका जो मतलब रिस्पॉन्स है जिसका व्हाट इज सिमेंटिक सिमिलैरिटी इज वेरी हाई. What could be its response? It might be Everest is Earth's peak. Everest is the tallest, snow peak, or Everest is, say, the highest among all the other mountains. This might be semantically similar sentence since it is talking about Mount Everest being at the highest location. Okay, so that is basically a highly semantic similar response. So you can talk about anything like Everest is Earth's high peak. Everest is at the top. Everest, say it is say a very tall mountain among all the 14 mountains or 7 mountains which are above 20,000 feet and so on. Okay, so you can talk about anything, but which will be a highly semantic to the actual ground truth, since ground truth was Mount Everest being the highest mountain. Okay, low semantic similarity response कैसे रहेगा? Himalayas are a mountain range in Asia. So it has nothing to do with actual ground truth. Okay, so it is entirely a different topic. So ये आपका semantic similarity एक metric हो सकता है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर है whether it is resonating with your ground truth or not. Okay, then you have answer correctness. Okay, now this is talking about the actual accuracy. Okay, so ये तो बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए. इसको आपको सिर्फ फैक्चुअल एक्यूरेसी देखना है. तो आपका क्वेरी था कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. योर ग्राउंड ट्रूथ आंसर वाज कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट आंसर क्या है? कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. एंड इनकरेक्ट कैपिटल आंसर क्या हो सकता है? सिडनी बोल दिया या मेलबर्न बोल दिया या दूसरा कोई बोल दिया सिडनी. दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आप लोग क्या करते हो? एग्जैक्ट मैचिंग करने की कोशिश करते हो. ये आंसर जो दिया है वो एग्जैक्ट करेक्ट है.
Here you are not trying to understand semantic similarity, you are not trying to understand contextual similarity क्या है, कुछ नहीं देखते हो. आप सिर्फ आंसर देखते हो. कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या था, कैनबेरा है. अब मेरे आंसर में कैनबेरा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो गलत है, आ रहा है तो सही है. खत्म हो गया. Okay. So in these, what do you say, with this help of different metrics, you can evaluate performance of your racks. Okay. Now again, this is theory. This is not the actual strategy with which you are going to calculate accuracy. So for that, you have this Ragas, what do you say, framework. तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, रागास एक ऐसा sort of how should I say, whether should I say it as a module or a library. So basically, it is kind of a system which helps you to uh, evaluate your performance of your rack system on the basis of different areas such as ground truth, your truthfulness, and then you have context relevance. Okay, so these are the pivotal principle of evaluating any RAG applications. So it is focused, or it is created in such a way that it will try to focus on these areas while evaluating your performance of LLM. Sorry, performance of RAG. Okay. So this was developed by this Jitin James and Shahul. Yes, this is none of our thing to work upon. Basically, it requires evaluation data. So it requires queries, it requires retrieved context, it requires the corresponding LLM का answer जो भी हम लोगों ने मिला है, and it requires the ground truth. Okay. So ground truth is basically, जैसे मैंने बोला, Canberra is the capital of Australia. LLM का आंसर क्या था, सिडनी इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अगर मेरे को इनकरेक्ट आंसर दिया था LLM ने, तो ये मैं यहाँ पे फीड कर दूंगा. कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्स्ट जो भी मेरे प्रॉम्प्ट के लिए आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, आई विल जस्ट एक्सट्रैक्ट दैट कॉन्टेक्स्ट, आई विल गिव इट टू इट. एंड बेसिकली जो मैंने क्वेरीज दिए थे, यूजर क्वेरीज, बेसिकली मतलब इवेल्युएशन के लिए जो भी क्वेरीज दिए थे, आई विल जस्ट फीड इट टू इट. And then perhaps I will be able to, then I will be able to get what do you say, the answer for evaluation, or I will get a score. Sorry, I was yeah, I talked about ground truth, no? Yeah, I did not talk about faithfulness. Okay. So it will try to, provide some metrics pertaining to faithfulness, answer relevance, context relevance, contextual recall, and it will try to assess the retrieval quality. So I think that's it. तो हम लोगों ने आज के सेशन में we tried covering the entire theory for advanced rack and the modular rack. So I think that is sufficient from a perspective of a theory. Okay, in the next session, आज मुझे वो notebook भी आपको, मतलब I wanted to show it to you, but perhaps I can upload it in the resource document. You can just run it by your own. और else हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक हार्डली 15 मिनट में उसको बहुत क्विकली कवर कर लेंगे. वो कोड पहले से ही रन है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू कि क्या चीजें कहाँ पे परफॉर्म हो रही है. ओके. And I think, yeah, that sums up the entire theory for RAG, and which I could think of. If you think that I have missed some topic, feel free to ping me. I mean, I can just provide you resources for that in the resource section. Understand the limitation. There are some limitations for like covering the content. The content can be infinite. There are multiple things at the advanced RAG level as well. But I tried to cover all the aspects which will make you understand the basic things about RAGs, advanced RAGs, and modular RAGs. Okay, I also tried covering all sort of RAG evaluation metrics, and yeah, I think that sums up the entire theory of RAG. So next session, mein, what we will do is we will try to cover the coding aspect, and yeah, then we will just wrap it up. If you have any questions, if you feel that I haven't covered some of the topics, you can just uh, ping in the forum, or you can just let me know. I will just provide resources for the same in the courses resource section. Okay. So I think today's lecture was little overwhelming, and I understand that because it talked a lot about theory, and it might be a little overwhelming. But I mean, if you are very much aware about all these concepts, I think you are
well versed or you're sound with the basic architecture of the RAN. Okay. So yeah, on that note, we can just wrap it up. So before going, I would like to, submit the form and you can just give me the feedbacks on the basis of that. So kindly fill this form. If you feel that my session was good or bad in any of the sense, if you feel it was bad, then also you try to mention it. Please, let me know all your feedbacks. Sure. Uh, sure. I'll be just connecting with you, Fayaz. No issues. I'll just connecting you after this session. Then yeah, we can just solve all these things. If possible, Prajwal, Fayaz, and all the people whose doubt I was not able to answer during the session, we can just put all these questions in the forum. Perhaps I mean I'll be able to answer this question. Thank you. And thanks for this comment. I really appreciate it. Uh, yeah. Then I think just fill this form before you are leaving this session. Then we can, work with the coding part in the next session. Thanks a lot. Thanks, Fayaz. Thank you. It, I mean, please let me know once you have filled the form that so that I will be able to understand if you are filling the form or not. And thanks, Prajwal. Kindly please fill it. Any of the issues if you are facing, please mention them. If you are finding nice things, you can also mention them. Then feel free to write your original feedback. Okay. People there. Please go in depth while explaining code two along with the bit of theoretical gist. Yeah. So Prajwal, we have like covered most of the theoretical gist in this, what do you say, in the form of these PPTs. In the coding session, yeah, I mean, I will try to cover it up. Even if I'm not, mentioning it explicitly, since we have less time, we have just one session while covering all these things. I will try to make sure that I am adding comments in my code. So you can just, read it and you can understand the things by there, so that it won't create any issue for you. Even after that, if you are not able to understand, then you can just let me know. I can just answer it in the forum or say you can connect with me. So I said, yeah, I will definitely do it. Yeah, yeah, don't worry, we'll do it. Uh, thanks for us. Everyone else as well, you can, just fill the form. We have 7 other books. If you are done, you can, I mean, feel free to leave. We are done with the session. Okay? I think, uh, I hope that you guys have filled the form. I'm just, ending this session. So yeah, sure, guys, no issues. So yeah, I mean, we can just connect in the next session for coding. And till then, take care. Let's meet in the next session. Okay. Thank you.